pleasure and privilege. Yeah, sir, चालू हो गया सर. Hello, I am audible. I am Yes, sir. audible. The voice is clear. Yes. sir. Yes, sir. Yes. Oh. So once again, good morning to each of you, and compliments for the day. It is my great pleasure and privilege to welcome Dr. Adil Ali Sakur, Assistant Professor IGIMS Patna, in this virtual platform of Om Sadasiv College of Pharmacy, Devghar. Dr. Sakur is MBBS, MD in Pharmacology with gold medalist. He is serving as the Assistant Professor in All India Institute of Medical Science, or Indira Gandhi Institute of Medical Science, Patna. He has many records of research papers, conference, and a vast experience regarding the pharmacovigilance and adverse drug actions. As a man of MD pharmacology, it gives him an additional advantage to apprehend these things and make the people beneficial with the knowledge of pharmacovigilance, particularly for the adverse drug action. I hope all of us will enjoy, will learn with their valuable words on the pharmacovigilance. I too have pleasure and privilege to welcome Dr. Manish K. Lakhitkar, PhD and a pharmacy man at this virtual platform of Om Sadasiv College of Pharmacy. Dr. Lakhitkar is one among us. He is from the pharmacy background. He did PhD and he was associated with many reputed institutes which is working and serving the nation in the field of pharmacovigilance and adverse drug action. He was associated with the Pharmacopoeia Commission also. So he has a treasure of knowledge regarding the adverse drug action and the pharmacovigilance. And we are very fortunate that today we will get something from the treasure of his knowledge, and we should be ready to receive it because such opportunity is rarely found. So we must get ready. We must get ready mentally and heartily to receive those words which he will deliver few minutes later. It was my wish that this program should have been conducted in the premises of Devghar Om Sadasiv College of Pharmacy. But unfortunately, the situation doesn't permit us to invite people in the campus. Still, I invite both of them, Dr. Adil and Dr. Lakhitkar, that whenever he will get the opportunity to visit the Devghar. Patna is not far from the Devghar. It is only 4-5 hours journey, and by road and trains, every communication is there. So whenever they get opportunity to visit Devghar, please intimate us and give us opportunity for the hospitality. We shall be very thankful and we shall be very pleased to have you in our campus. Devghar is a very good place. Of course, Patna is not far from Devghar, so I do not want to say many things about Devghar because Patna people must know what is Devghar. It is a Jyotirling place. It is situated in the lap of Santhal Pargana mountain hills. The climate for 6 months is very good and healthy. People from many part of the people, particularly from Calcutta and Delhi,
used to come here for the health holiday, particularly in the month of November to February. Devghar is a home of Lord, and it is a really home of Lord. People come, people get blessed, people get a spiritual vibration here. So it is a very nice place, naturally, spiritually, religious. And I invite both of them. Like, that whenever they feel convenient, please visit Devghar and please visit our college, and we shall be very helpful. We shall be very happy to host you at our premises. Now, today they are going to deliver a speech and clarify your queries regarding pharmacovigilance. Pharmacovigilance is a very important part of drug and medicine science. It is as important for the pharmacist as important it is for the medical professionals. It is equally important for both of the professionals. Pharmacovigilance is a science in which we record, we monitor the effect of drug, harmful effect of drug after getting it marketed. Whenever the new drug is being marketed, whenever the drug control department gives the permissions to manufacture a new drug, now it is the duty of the department and the health department and the regulatory department of the drugs to monitor it. What is the effect of it? What is the harmful effect of it? Is it any? And only then it can be declared safe after use of 3, 4, 5 years. So a drug is a new drug has the time period of 5 years. Within 5 years, it is being assessed regarding its side effect, regarding its efficacy. Not only side effect. Is it efficient? It is better than the drugs available in the market. There are so many drugs for the same clinical use is available in the market. But what is the efficacy of this new drug? That is also to be monitored. That is also to be taken care in the pharmacovigilance. What are the side effects? What are the adverse effects? So the horizon is very big and very important. In USA, I tell you, I did PhD on drug and drug development. So I know the regulatory provisions of the different countries. In UK, in USA, new drug is given permission to market, and after that, along with the company, manufacturing company, the regulatory department means drug control department, FDA, also monitor the efficacy, side effects, and adverse reaction of the drug for 3-4 years. They parallelly do it. They do not disclose to the manufacturers. In developed country, in America and UK, they do not disclose things to the manufacturers. Independently and secretly, they assess the efficacy of that new drug for which they have granted permission. Is there any side effect? Is there adverse effect reported? And the manufacturers have also this duty to monitor this, record this, and make these records available to the drug control department, FDA department, food and drug department. And both of the results is being compared, and then after 3-4 years, only then it was allowed to continue to market that drug. If there is adverse reactions, if there is no much efficacy regarding the available drugs or any side effects, it is not allowed to market those drugs after 3-4 years. So it is a very important department. And for today, it is very relevant because everyone is apprehensive. The apprehension was more regarding this corona vaccine. But great resistance was there. Even the intelligentsia class, learned class, were apprehensive regarding the taking corona vaccines. And government
was not in a position to clarify all the queries because the pharmacovigilance report was not there. It was in emergency, it was developed. Emergency was allowed for the marketing. So government or the drug department or the medical department was not in a position to satisfy all the queries of the people. So people were very apprehensive. Still it is apprehensive. What will be after taking this drug? Is there any long-term effect? Is there any short-term effect? Regarding short-term effect, now people are confident that no, nothing short-term adverse reaction is there, but still people are very, very apprehensive regarding long-term effect. I heard and I experienced that when polio vaccines was given to all the children, particularly one sect of the people was resisting it, and there was apprehension that it will make the child impotent. Impotency will be there. That was the rumor, and government has clarified. So pharmacovigilance is a very important part, particularly for the general people also, because only this pharmacovigilance department can clarify the people that the drug which has been administered or the new drug which has been given permission to be administered is safe for the people. And people want their certificate. In the lack of this certificate for the Covaxin, these so many problems are there. So it is a very important part for the drug developing industries who is developing this doses for the medical professionals and for the people also. It is equally important for all three. There is a very few things, there is a very few part in this medical science and drug science where all three class of people is interested. Manufacturer is interested with efficacy, medical people is interested with the side effect and efficacy, and general people is interested with the side effect and adverse effect. But here all three are interested. So it is a very important department. I think we have learned a speaker on this subject. He will make you know the things, and they will also satisfy your query also. So I think we all enjoy it. We will all learn. I welcome all the faculties members of the college, non-teaching members of the college, all the students, and all the persons, guests who are participating in this virtual platform. I welcome all of them, and I wish that all of us will enhance our knowledge about the pharmacovigilance, which is very important but neglected in India. I tell you, it is very important but neglected in India. In the developed country, it is a very important topic, very, very important, serious topic. But it is in India, like a Sanskrit subject in the high school, it is a neglected subject. That is an irony. That should not be. But we are fortunate that we will get so many knowledge from the treasure of our two guests. So once again, I welcome Dr. Adil, Dr. Manish Katheka on this virtual platform, all the faculty members, teachers, students, and all the guests who are participating in this virtual meeting. And we hope that all will enjoy it and all will learn it. With thanks, I request now Ms. Asnigdha to continue with the program. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Once again, I, Snigdha Bag, on behalf of the entire fraternity of Om Sadashiva College of Pharmacy, welcome you again to this event, to this online conference on National Pharmacovigilance Week, themed Pharmacovigilance, a step towards patient safety. Moving ahead, I would request Shri Udit Kumar Dev, sir, Secretary of Om Sadashiva College of Pharmacy, to light the lamp in front of Goddess Saraswati to mark the commencement of the program.
दीदी पंखा चालू करो। और क्या चल रहा है बाकी? बढ़िया। कपड़े फिर धो रहे हो कि नहीं धो रहे हो आज? Thank you. Pharmacovigilance plays a key role in the healthcare system through assessment, monitoring, and discovery of the interactions among the drugs and their human effects. PV, that is pharmacovigilance, is concerned with the detection, assessment, understanding, and even the prevention of the adverse drug reactions. Thus, for the safety medication, adverse drug reaction monitoring is required for each medicine throughout its life cycle. During drug development, such as pre-marketing, including early stages of drug design, clinical trials, and post-marketing surveillance. Therefore, this webinar session has been organized to highlight the objectives and the methodologies used in PV and the role and importance of PV in the pharmaceutical sector. Moving ahead, I would just like to present a small AV of our college. दीदी इधर वाला। Welcome to Om Sadasiva College of Pharmacy. Om Sadasiva College of Pharmacy is a unit of Om Sadasiva Charitable Trust. It was established in the year 2018. The college is approved by Pharmacy Council of India, New Delhi. Courses offered by college are Diploma in Pharmacy and Bachelor. The trustee of Om Sadashiva Charitable Trust are Dr. B.L. Das, Chairman, Shri Ashok Kumar Gupta, Vice Chairman, and Shri Udit Kumar Deo, Secretary. The main vision of the trust is trust believes in contributing to the growth of our nation by providing quality education in pharmacy. The committee members of college are Shri Ram Rudra Prasad Deo, retired Shri Madan Mohan Prasad, ex-State Drug Controller Bihar, Shri Hemant Kumar Sinha, ex-State Drug Controller Bihar, Professor Ram Nandan Singh, retired Associate Professor and HOD Devghar. The nearest destination from the college, it is just 1.3 km from JCB railway station. Devghar International Airport is around 15 km from the college. The world-famous Baba Baidyanath Mandir is just 8 km. The facilities of college are classroom, library, labs, Wi-Fi campus, computer lab, playground, canteen, medicinal garden, scholarship for meritorious students. The classroom is well furnished and spacious. Online learning facilities are provided to students during pandemic of COVID-19. College library has more than 2,000 volumes of books with reading room facilities for students and online e-journal and e-books access. The college has 13 well-equipped labs with managed ventilation and fire safety.
Also individual workstation for students, implemented strict lab safety rules, and all the labs have centralized commercial gas supply. Glimpse of some still lab pictures with various equipments are computer labs have computers with latest configuration with Wi-Fi, and whole campus is having secured Wi-Fi connection. Various cultural activities organized by college are Sports Day, Saraswati Puja, Pharmacy Day, Independence Day, Teachers Day, Plantation Day, as well as induction program. Thank you so much for watching this video. Next, I would request Sangeeta ma'am, program coordinator, to give the briefing of the events done during this week and also to introduce to our guest speakers. Hello everyone and welcome to today's session. Myself Sangeeta, Assistant Professor, Om Sadasiva College of Pharmacy. We are celebrating National Pharmacovigilance Week. During this week, we have organized a lots of events such as poster presentation, quiz contest, essay writing. And as it is the last day of National Pharmacovigilance Week, so I am declaring the winner's name. For quiz, for essay writing, the winner are Ashok Marandi, second winner are Akash Anand, and third one is Pankaja Kumari. Next event was quiz, and the winner are, first winner is Praveen Kumar Gupta, and the second winner is Ashok Marandi. And these are the glimpses of the e-poster which are designed by our students. And the winner of e-posters are, first winner is Pooja Kumari and the second winner is Mahimasi. Thanks to all the participants and congratulations to the winner. Now we are gathered here to celebrate the last day of National Pharmacovigilance Week. On this occasion, we have two eminent speakers, Dr. Monish Kumar Likhitkar and Dr. Adil Ali Shakur. Dr. Monish Kumar Likhitkar is ex-patient of Safety Pharmacovigilance Associate at IGMS Patna. He is former assistant professor at Globus College, Bhopal. Currently, he is working as associate professor at IPS Academy, Indore, MP. Having a lots of experience in drug safety surveillance, adverse event, medical writing, AGI reporting, identifying individual case safety report, etc. He is proficient in medical and scientific writing, MIDRA, SUSAR, ICSR, WHO drug dictionaries, GCP, pharmacovigilance, clinical trials, as well as current FDA and EU regulation. Though he has many ongoing research projects, one of them is pharmacovigilance in oncology. I hope we will definitely enlightened by his words. Sir, please. Monish, sir. Hello. Thank you, Sangeeta ma'am. Welcome, sir. Am I audible? Yeah, yes, sir. Okay, okay. Thank you, Sangeeta ma'am. Welcome, sir. Das sir and Santosh sir for giving this opportunity. Hello. Yes, sir. You are audible, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. As we know that we are celebrating the Pharmacovigilance Week, and as per the regulations of IPC and Indian Pharmacy Council, and they are suggested to celebrate from this year. We will going to celebrate every year from 17th to 23rd September as a Pharmacovigilance Week. As Das sir told, in India, pharmacovigilance is still under the notable positions, because in US and UK,
they stabilized the many format for the pharmacovigilance platforms. But in India, they started pharmacovigilance very late. But in current scenario, in 2016, every pharma company mandate to report their adverse drug reactions or adverse event to promote the pharmacovigilance as well as post-marketing surveillance safety during the phase 4 conditions also. But what was the reason in India the pharmacovigilance under reportings? Because in India, there is no communication. There is no communication about the pharmacovigilance, and also the health professionals like physicians, pharmacists, nurses, they don't know the how to report and where to report the adverse drug reaction. So to promote the pharmacovigilance as well as patient safety, to promote the safety of patients and human beings, they promote the pharmacovigilance week. So let's start. Can I share my slide? Yes, sir. Please allow me. Yeah. Yeah. Pharmacovigilance week. So today's theme is pharmacovigilance, a step towards patient safety. Myself, Dr. Monesh Likhitkar. I'm a PhD in pharma, and I was ex-patient safety PV associate in Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, and I was appointed as a PV patient safety associate in Adverse Drug Reaction Monitoring Center, Indira Gandhi Institute of Medical Science, Patna, from 2017 to 2019. Right now, I am a associate professor in IPS College, Indore, and also a pharmacology teacher in pharmacovigilance subjects. And right now, I am also a freelancer for the medical writing and scientific writing process also. So let's start with the pharmacovigilance and overview. As you know that, what is the voice of the patient? Every patient has first, keep me safe. Second, get me well. Then treat me nice. That means कि हर एक पेशेंट्स की एक जो 3 चीजें होती है वो होगी, प्लीज मुझे सेफ रखिए, देन मुझे ठीक कीजिए, एंड ट्रीट मी नाइस. But can we say that the drug is absolutely safe and know everything about its safety? No, because every drug has some adverse event or adverse drug reaction. Here I am pointed 2 words like adverse event and adverse drug reaction. So what is the adverse event and what is the adverse drug reaction? Adverse event, it is the event which may be connected or may not be connected with the drug. But when event is connected with the reaction, that means a drug is responsible for this reaction, they converted into adverse drug reaction. Okay, the process between adverse event to adverse drug reaction, it is the process known as the stabilization of the ADR. Before ADR, you can't tell the adverse event is responsible for the, drug is responsible for the adverse event. So in the history, in 1969, thalidomide disaster was occurred and the story of pharmacovigilance begins. So let's start with the pharmacovigilance, the basics of pharmacovigilance. As you know that the pharmaco, that means the medicine, and vigilance means the watchfulness and alertness. So in combined form, that means the medicines, watchfulness or alertness is known as the pharmacovigilance, because in maybe a medicine, a danger, or it
maybe life-threatening. So process for the watchfulness of the medicine is known as the pharmacovigilance. That means the pharma plus vigilance. So safety first. Before treatment, every drug should be safe. So let's start with the WHO definitions. Pharmacovigilance is the science and activities dealing with the 4 parts. First is the detection, second one is the assessment, third one is the understanding, and fourth one is the prevention. That means pharmacovigilance is the science which is deal with the process of detection of ADR. Detection of ADR, the first step. We will detect the ADR. Then after detection, we will assess which is responsible or not. That means कि क्या वो ADR उस medicine से connected है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं wrong path पे जा रहे हैं. Then that means the process of assessment. This is known as the causality assessment. Then after assessment, we will understand the what was the reason for the occurrence of the ADR. That means कि क्या वो ड्रग सच में उस ADR के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और अगर रिस्पॉन्सिबल थी तो ऐसा क्या था उसके अंदर जिसके कारण वो ADR डेवलप हुआ. Then after understanding, we will work for the prevention. So in combined form, it is known as the pharmacovigilance. So why pharmacovigilance important? Because every human have a right to be safe during the treatment, after the treatment. Okay, so first is do not harm, and patient should be safe. And third and most important, economical concern of every country, because if patient will not safe, or treatment will be prolonged, and then economical condition will be down. So let's start with the history. History of drug safety. With the drug is old as use of the drug. That means कि drug safety उतनी ही old है जितनी कि जब से drug आई है treatment में. That means कि in 1780, if a physician makes a large incision with the operating knife and kill him, his hand shall be cut off. In 1780, okay. In 10th century, adulteration of drug was penalized. In 10th century, and 13th century, oath of everything drug should be of such good quality, of such usefulness, that he knows upon his oath that it will be a good and useful for the confession what the physician is making. That means drug should be a good quality and with usefulness. And in 1599, William Spank's first inspector assigned for the drug safety. Okay, and in 1785, his work for the Foxglove, which is from the digitalis for the cardiac events. And after that, evaluation of drug safety analysis. First disaster was notable in the 1937, when the elixirs of sulfonamide was prepared in diethylene and 107 mortalities were reported. That means कि 1937 में 107 ट्रीटमेंट जिनको ट्रीट किया गया था उनकी डेथ हुई. In 1938, Food, Drug and Cosmetic Act was signed, which required the safety testing of drug before marketing European story. In 1897, Hoffman resynthesized diethylene morphine and marketed as analgesic and antitussive. That means यहाँ पे क्या हुआ है, आपने 1897 में अगेन जो ड्रग थी उसको वापस से रिसिंथेसाइज किया, ठीक है, और उसके जो एडीआरस थे उसी एडीआर को एज ए ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिक ट्रीटमेंट यूज किया गया, जिसको कि हम हेरोइन के नाम से जानते, ठीक है. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, बेस्ट स्टोरी ऑफ usefulness of ADR or pharmacovigilance process. In 1950, Stelline again marketed as an antibacterial in France, and poor manufacturing quality, that means the tin containing product, they again lead to the encephalopathy and neurological deficiencies. This is the again story of pharmacovigilance. Why pharmacovigilance?
important. Pharmacovigilance important, a lesson from history, that is the 1959 to 1967, thalidomide is 4,000 to 10,000 cases of phacomelia was reported. What is the phacomelia? This is the congenital limb defects. That means thalidomide drug was given to the pregnant woman for the morning sickness, and 4,000 to 10,000 in the 3 years. Okay, they developed the phacomelia. So after this case, drug was withdrawn from the market. So that means the pharmacovigilance, first ADR may be serious or non-serious. Okay, that means the what is the serious conditions in the estrogen contraceptives 1960. We are talking about the history. Breakthrough bleeding was reported, estrogen contraceptives. Then hypertension was reported, weight gaining, blood clotting disorders, cardiac complications, breast tenderness, and galactorrhea. So Indian Pharmacopoeia Commission recently, some drugs are banned. It is the success of pharmacovigilance of Indian Pharmacopoeia Commission. Some drugs are banned, like sibutramine for the adverse cardiac event, remotermate, suicidal identification, then placental extracts, nimesulide. Below 12-year age, they developed the hepatitis. Rifecoxib, they developed the cardiac event, adverse cardiac event, and rosiglitazone, they developed the heart attack. Gefloxacin, severe hypo and hyperglycemia. Then estimazole, adverse cardiac event, and cisperidine for the cardiac events, adverse cardiac events. So these drugs are banned due to their adverse drug reactions. So pharmacovigilance is very needed for the protect the patient from the serious adverse effect, and it is also maintaining the benefit risk of medicine. So what is the benefit risk of medicines? That means we will check. We can't ban each and every drugs due to the adverse drug reaction. For example, chemotherapy drugs, because we know that what is the benefit and what is the risk, because we will evaluate the benefit risk analysis during the clinical trials also and after the post-marketing surveillance process. So we will maintain the benefit risk of medicine. If benefit is high or risk is low, that means that drug is, it can be like marketed in market. So, but if benefit is less and risk is high, so we will withdraw from the market. Again, take informed about the prescribing medicines. That means if drug is prescribed from physician, patient should be reported to physician, they informed, and during the treatment, this is the responsibility of physician. They inform the patient about the adverse drug reaction. It may be minor or not be like is a non-serious. Okay, and if physicians prescribe the drug which have the adverse drug reaction, they prescribe alternate medicines. Okay, so pharmacovigilance is needed for the treatments also. मतलब अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है जिनके पास में अगर कोई ड्रग है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उनको फार्माकोविजिलेंस का नॉलेज नहीं है, they don't know about the adverse drug reaction, but in market alternate medicines are available, so they can prescribe alternate medicine with the less adverse drug reaction. So what is the need of pharmacovigilance? First, insufficient evidence of safety, because clinical trial prior to marketing, limited number of patients can be exposed and ethnic variation. You can see the vaccines, corona vaccines. Okay, because clinical trials, the first phase, second phase, third phase, very limited number of patients exposed. But now drug in market, so lots of patients exposed right now. So
adverse drug reactions are reported right now. But again, we are checking the benefit risk analysis here. We can't ban the vaccine. Okay. So this is the need of pharmacovigilance, because during the clinical trial, insufficient evidence of safety. Then again, ensuring the public confidence, we can connect it with the again corona vaccines. Okay. Because if like adverse drug reaction is less or maybe minor, so public confidence will be boosted. Okay. Then promotions of rational use of medicines and adherence. Again, during the pharmacovigilance, rational drugs they are promoted for the use and to reduce the adherence. So need of pharmacovigilance, again, ethics more. Ethics very important, because if something is that is harmful, that means if to know the something that is harmful to other person who does not know and not telling is unethical. That means if you know that the drug is like is a adverse reactions can be harmful for the patient and you are not telling him, so that means this is the unethical. मतलब अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं, अगर मैं डॉक्टर हूं और अगर मैं किसी को प्रिस्क्राइब कर रहा हूं मेडिसिन और मुझे पता है कि वो ड्रग जो है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन दे रही है, बट हम उसे बता नहीं रहे, इट इज कंप्लीटली अनइथिकल. ओके. एंड अगेन, if you are patient and you are not reporting the serious unknown reaction, it is also unethical, because अगर आपको कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है और आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, उस ड्रग को मार्केट में रहने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, जो कि आफ्टर सम टाइम मे बी लीगल. सो फॉर द रिपोर्टिंग, patient's responsibility, healthcare professionals and also manufacturers and authorities also. What is the manufacturers? That means if like some like MH, the marketing holders authorizations, like companies, pharmaceutical companies, they marketed their drug, and though they got the adverse reaction from the doctors, from medical representative, and they are not telling to the authorities like CDSCO in India. So it is the totally unethical. Okay. So what is the scope of pharmacovigilance? Continuous monitoring of ADRs will develop the safety of medicines, safety of patients, and also develop the risk evaluation and minimization of the risk. Risk minimization, that means when treatment is following, that means the risk will be less. Medication studies like polypharmacy will be less. So after ADR reporting, what will be the step of regulatory authorities or companies? They develop the process and also black box warning. What is the black box warning? आपने कभी देखा होगा कि कुछ जो ड्रग्स होती है, उस ड्रग्स के बॉक्स पे एक ब्लैक बॉक्स बना होता है जिसमें कुछ वार्निंग दी होती है. दिस इज द ब्लैक बॉक्स वार्निंग. दैट मीन्स ये फिजिशियन को पता होना चाहिए कि इस ड्रग के ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, एडवर्स इवेंट्स है, एंड restrictions of use in some categories like pregnant women, childs. Okay, so should be reported in the box. Withdrawal of drug continuous. For example, अगर मान लीजिए आपने कोई ड्रग कंटिन्यू करी है और अगर डॉक्टर्स उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है और आप अगर पेशेंट है, okay, so you should monitor the drug. Okay, what was the reactions and also the drug surveillance. So this is the withdrawal of drug continuous also. So evaluation of pharmacovigilance. In 1969, Digitalis reported the mortalities due to the absence of communication between physicians. Okay, and D is for prevention of miscarriage, incidents, vaginal adenocarcinoma. They developed adenocarcinoma. Diethylstilbestrol. In 1971, the International Drug Monitoring Program was established due to this historical events.
In 1971, they first established International Drug Monitoring Program. In 1972, National Pharmacovigilance Center was established in WHO, and ICH and CMS established later. What is the ICH and CMS? This is the regulatory process, International Conference of Harmonization, and CMS is the form which is worldwide accepted. So what is the role of pharmacovigilance? Role of WHO in pharmacovigilance? First, to identify the ADR, they could not be found through the clinical trial programs. That means, as we know that during the clinical trial, the less patients exposure. So in the phase 4 post-marketing surveillance process, they identify the ADRs from the different region of world and collecting the ADRs. And this is known as the case reports. So what is the case which is known as the case report? This is the ICSR. ICSR is the individual case safety reports of patient, individual case safety report, and reported to the Sweden Uppsala Monitoring Center, the head office of WHO. So what was the role of the WHO persons? Like, they first detect the signals, signal review, then dissemination of the information, then education advisory, and research and development. What is the signal? Signal, it is the first indication of ADR. This is the first indication of ADR. Okay. If WHO found that the different part of the world, they received the, for example, like Covaxin. Okay, Covaxin show the headache. Okay, they received the data from different countries. So they put it into the signals. This is the red signal. This is the alarming conditions. Okay, then after the detection, they review the signal. They review the signal again. They check the, because not 100% is the responsible drug for the ADR. Maybe patient's conditions, patient's medical history, मतलब कुछ भी हो सकता है. That means कि patient's की age, sex, different criteria for the signals. Okay, then if signal is okay, is a positive signal, then differentiate information to different regulatory authorities and to check their locations for the signal process. Then after, they educate and produce the advisory to the regulatory authorities. And if signal is completed, they again send to the research and development department and they develop the drug again. So let's start with the pharmacovigilance terminology. This is a very important for the pharma students who pursue the career in pharmacovigilance. This is the interview-based slides actually. So, adverse drug reactions. A response to a drug which is noxious and unintended, which occurs at a dose normally used in the men for the prophylaxis, diagnosis, therapy of disease, or for the modification of physiological function. Please read. Huh? A response to a drug. This is the main interview question for the pharmacovigilance job. Okay, what is the idea? A response to a drug which is noxious and unintended, in which occurs the dose normally used in the men for the prophylaxis, diagnosis, therapy of disease, or for the modification of physiological function. Simple. अगर ऐसी कोई ड्रग है जो कि नॉक्सियस है और अनइंटेंडेड है, जिसको कि हमने यूज किया गया है उसी डोज पे, पेशेंट में उसी डोज पे हमने यूज किया है, जो कि हम देते हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए, डायग्नोसिस के लिए और थेरेपी के लिए, डिसीज की थेरेपी के लिए. ओके, दैट मीन्स कि हमने डोज चेंज नहीं करा है. ओके, दैट मीन्स कि जो डोज है उस डोज पे ही अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए और उससे अगर कोई नॉक्सियस और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स अगर हो रहा है, सो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू एडवर्स ड्रग रिएक्शन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ WHO 1972. ओके,
And again, what is the unexpected ADR? Unexpected ADR, that means कि आपने कोई drug दी, an adverse reaction, the nature of severity of which is not consistent with the product information. What is the product information? Again, आपने कोई drug ली, आपने market से खरीदी या आपको prescribe की गई है जो drug, and आपको ऐसी कोई adverse drug reaction दिख रही है जो कि product information में है ही नहीं, suddenly, okay? तो this is the unexpected ADR, जो कि हमें पता नहीं था, because some drugs develop after years. For example, diabetes patient, they develop ADR after 10 years or 15 years. Okay, so this is the unexpected ADR. So again, serious ADR and serious adverse event. The 5 again. This is the most important question for the PV jobs. What is the serious ADR? 5 points should be there. Serious ADR वही होगी जो result in death देगी. First condition. Second condition, drug is life threatening. Third, patient को hospitalization करना पड़ेगा drug देने के कारण. Fourth, patient में result in persistent and significant disability. That means कि अगर आपने कोई drug दी है और patient को क्या हो रही है, फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब वो चल फिर नहीं पा रहा है, उसको परमानेंट कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है. एंड नेक्स्ट, बर्थ डिफेक्ट. अगर आपने किसी प्रेग्नेंट वुमन को दिया है और जो बर्थ हो रहा है, जैसे कोकोमेलिया का जो कंडीशन थी, दिस इज द कंजेनिटल एनोलॉमी एंड बर्थ डिफेक्ट कंडीशन. अगर इन 5 कंडीशंस में अगर आ रही है कोई भी आपकी मेडिसिन, देन यू शुड बी रिपोर्टेड एज ए सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन. हेडेक, nausea, vomiting, this is not a serious adverse drug reactions. Okay. This is the guidelines of good clinical practice, GCP, guidelines of good clinical practice, E6, R1 modules. So what is the difference between serious and severe? Serious and severe. The term severe is often used for the describe the intensity of a specific event. Okay. That means severe may be mild, moderate, severe. Myocardial infarction like headache, severe headache, mild headache, moderate headache. This is the severe. But what is the serious? Which is based on the patient's and event outcome. That means the conditions of patients. If the 5 categories like death, birth defects, and so on, they categorized as a serious conditions. This is the clinical safety data management ICH guidelines. Definition is standard for the expedited reporting E2A. This is the guidelines of the ICH. Again, as per the guidelines, ICH guidelines, the severity divided into minor, moderate, and severe and lethal. Okay. Minor, no antidote and therapy or prolongation of hospitalization required. That means कि अब अगर मान लीजिए कोई ड्रग है जिससे कोई माइनर सेवरिटी अगर हमको दिखाई दे रही है तो हमें एंटीडोट देने की जरूरत नहीं है, ना तो हमें थेरेपी को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत है, ना तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत है. अगेन हम इसको मैं अगेन आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से वैक्सीन से कनेक्ट कर रहा हूं. अगर आपको कोई माइनर से एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं तो आपको कोई थेरेपी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. आपको अगर वैक्सीन से फीवर आ रहा है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं. दिस इज द माइनर एरिया. मॉडरेट रिक्वायर चेंज इन ड्रग थेरेपी. ओके. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन बाय एटलीस्ट 1 डे. अगर मान लीजिए आपको अगर कोई ड्रग दी गई है और उसके कारण आपको कोई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और आपको 1 डे के लिए अगर हॉस्पिटलाइजेशन दिया गया है तो इज अ मॉडरेट. पर अगर मोर देन 1 अगर आपको डे अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है उस ड्रग के कारण, तो वो सीरियस में चली गई कंडीशन. ओके. देन सीवियर, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, परमानेंट डैमेज हो रहा है ड्रग के कारण, और लीगल कंडीशंस है, डेथ टू द पेशेंट. सो इट इज द सीवियर कंडीशन. So again, medication error is very intentional error actually, because in prescribing condition
or dispensing or administration of a medicinal product, the healthcare professional don't know about the adverse drug reactions, and they are unintentional actually. So medication error should be vigilance during the treatment. First condition, medication error. Okay. Then again, misuse. Misuse, that means ki situation the medicinal product is intentionally and improperly used. That means ऐसी कोई ड्रग जिसको कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो है उससे रेदर देन अगर हम कुछ ड्रग दे रहे हैं, हम उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इंटेंशनली दे रहे हैं. ओके, सो दिस इज द मिसयूज ऑफ ड्रग. एंड व्हाट इज द ऑफ लेबल यूज? दिस इज द topic of medical information department, actually off label use. I am dealing with medical information also. Right now I am working in a medical information department as a freelancer. So medical label use, that means they related to the situation where the medical product is intentionally used for the medical purpose, not in accordance with the authorized product information. थोड़ा सा confusion है यहाँ पे. मतलब अगर फिजिशियन ने intentionally मेडिकल पर्पस के लिए ओके किसी को ड्रग दी है, ओके, सो दिस इज द ऑफ लेबल यूज. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेडिकल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो कंफर्म करेंगे कि आप ऑफ लेबल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो जब भी फिजिशियन ऑफ लेबल यूज करता है, बिकॉज इन इंडिया बहुत चीजें बाकी है अभी करना. In Europe and US, they develop the medical information departments. Medical information departments, अगर आप ग्लेनमार्क की ड्रग यूज कर रहे हैं, अगर आप सिप्ला की ड्रग यूज कर रहे हैं, अगर आप फाइजर की ड्रग यूज कर रहे हैं, तो आप साइट पे जाके देखिए मेडिकल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ फाइजर, आपको एक पूरी साइट ओपन दिख जाएगी. वहां पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई देगा. उनके 24 आवर्स कॉल सेंटर्स ओपन होते हैं ऑफ लेबल यूज के लिए. दैट मीन्स कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कोई ड्रग ऐसी दिख रही है कि जिसको मैं प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ बट आपके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में नहीं है, सो आप कॉल सेंटर्स में कॉल करेंगे और आप वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे, और कॉल सेंटर वाले आपको वर्ल्ड वाइड जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिली है उस ड्रग से रिलेटेड कि हाँ आप इसको यूज कर सकते हैं और हमने इसको क्लिनिकल ट्रायल में डाल दिया है, तो आप उसको दे सकते हैं. दिस इज द इंटेंशनली यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस. सो दिस इज द ऑफ लेबल यूज फॉर द पेशेंट ट्रीटमेंट. ओके, दिस इज नॉट a misuse. So again, in India, effective communication very needed in pharmacovigilance, because this is the, you know that the polio and TB, this is the 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, डॉक्टर से तुरंत मिलिए, बलगम की जांच कराइए. ओके, दिस इज द 2 वीक एंड टीबी हारेगा देश जीतेगा. दिस इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था टीबी के लिए, और इसके कारण हम बहुत कुछ आगे भी बढ़ गए. ठीक है, एंड 2 हफ्ते हो गए क्या, देन अगेन दिस इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ गवर्नमेंट. मेरा कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन के कारण ही आज हम पोलियो और टीबी में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं. अभी हमारी कंट्री डेवलप कर चुकी है, पोलियो फ्री हो चुकी है हमारी कंट्री, जबकि हमारी नेबरिंग कंट्री जो है वो अभी भी स्टिल पोलियो से जूझ रही. ठीक है, सो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कम्युनिकेशन इन फार्माकोविजिलेंस व्हाई नीडेड? बिकॉज ड्रग एंड ह्यूमन बीइंग interconnected. Welfare of millions of peoples are in danger due to the failure of medicines, because communication poorly executed here. And second great priority and most important, in India no pharmacovigilance personals are trained. Even we just like सी द इस ड्रग से हमें एडीआर हो गया है, हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, और हम ना तो किसी को इन्फॉर्म करते हैं ना हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं था. अब डेवलप हो चुका है, बट इन 2011 के पहले हमारे पास में कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे हम रिपोर्ट करें.
So communication, in effective communication should be clear message. Clear message के बाद में should be received and understand. Then after understanding, changes should be there, like drug withdrawal or changes of drugs, and feedback to the companies and regulatory authorities. So this is the final result of good communication or effective communication. So let's start with the important part of the medicines. In US, approximately 10 for every person in population affected to the drug, and UK approximately 750 million community prescription annually. ठीक है? So ADR increase exponentially. That means कि जितनी ज्यादा ड्रग प्रिस्क्राइब होगी पेशेंट्स को, उतनी ज्यादा ADRs क्या होंगे, डेवलप होंगे, इंक्रीज होंगे. सो सबसे मेन प्रॉब्लम इन इंडिया और बाहर के कंट्रीज में भी सेल्फ मेडिकेशन, OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इंटरनेट. जस्ट हमने इंटरनेट पे सर्च करा, ओके ये ड्रग इसके लिए देते हैं, तुरंत मेडिकल पे गए, हमने ले ली. हमें क्या हुआ, हमें ADR हुआ, हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया. ओवर द काउंटर हम गए मेडिकल स्टोर पे, हमने ड्रग्स ले ली. ट्रेडिशनल मेडिसिन, बिकॉज ट्रेडिशनल मेडिसिन देयर शुड बी ड्रग इंटरेक्शन. अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं और उसके साथ में आप कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन भी ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसके एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं. सो मिलियंस ऑफ पेशेंट्स आर सेल्फ मेडिकेटेड. एंड कम्युनिकेशन चेंजेस इन फार्माकोविजिलेंस कैसे चेंज कर सकते हैं हम? फर्स्ट, हमें ADRs की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि ADRs क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, एंड रिपोर्टिंग कैसे करनी है. ADRs कैसे रिपोर्ट करनी, कहाँ रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करें. देन कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट्स, हार्म एंड इफेक्टिवनेस, रिस्क. दैट मीन्स कि हम हर चीज को रिपोर्ट करेंगे तो फिर तो हर ड्रग मार्केट से विड्रॉ हो जाएगी. सो हमें ये भी देखना होगा कि बेनिफिट्स क्या है, हार्म्स क्या है. ठीक है, हमें प्रमोट करना होगा रेशनल ड्रग यूज को एंड ट्रेडिशनल, डीलिंग विद द ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस. जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स बने हुए हैं हमारे यहाँ पे ड्रग्स को लेके, उसे हमें, उसके साथ में हमें डील करना होगा, हमें उससे आगे आना होगा. और जो प्रैक्टिस हो रही है, जो एक नॉर्मल जो प्रैक्टिस चलती आ रही है, हमें उससे भी डील करना होगा. सो फिजिशियंस को एक अवेयरनेस बना के रखनी होगी कि जो हम ड्रग दे रहे हैं, मार्केट में ड्रग्स आती है, चेंज होके, रिसर्च होके ड्रग्स आती है, तो हमें एज ए फिजिशियन हमें डील करना होगा उसके साथ में कि हमें प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट लाना. ओके, पेशेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत कंपलसरी है, बिकॉज अगर आप उनके साथ में इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे उनके साथ में, दैट मीन्स कि आप उनके साथ में कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आप उनको फॉलोअप देंगे. हमारे यहाँ पे फॉलोअप का इतना नहीं है, बट आप बाहर के कंट्रीज में जाइए, आपको अगर कोई मेडिसिन लेके अगर आप घर पे आते तो आपको दिन में 3 बार कॉल आएंगे. इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे उनसे कि क्या हो रहा है पेशेंट के साथ में. हर ड्रग के बाद में उनके कॉल सेंटर से कॉल आता है पेशेंट्स के पास, अभी हमें वो डेवलप करना होगा. यहाँ पे प्रिवेंटिंग ऑफ रिजॉल्विंग क्राइसिस, क्राइसिस को प्रिवेंट करना होगा जो क्राइसिस होते हैं. एंड कम्युनिकेटिंग डिफरेंट जो अथॉरिटीज है, लाइक रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ में, देन कंपनीज के साथ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, लाइक फार्मासिस्ट है, नर्सेस है, फिजिशियंस है, उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बना होना चाहिए ताकि उस ड्रग का प्रॉपर जो है वो रिपोर्टिंग हायर लेवल तक जाए. देन व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम्स इन ड्रग सेफ्टी? इंडिविजुअल वेरिएशन एंड सक्सेसिबिलिटी, बिकॉज एवरी ड्रग हैज वेरिएशंस इन देयर different reactions. So and next is the polypharmacy. आपको कुछ भी हुआ है, आप एक काम कीजिए, आप ये भी ले लीजिए, आप ये भी ले लीजिए. ठीक है, पॉलीफार्मेसी. ओके, देन इंटरेक्शन ड्यू टू द पॉलीफार्मेसी, drug interactions there. And resistance that means कि एंटीबायोटिक आपको क्या करना है, एजिथ्रोमाइसिन आपको 3 to 5 days ले, पर आपने क्या करा, आपने उसको एक दिन लिया, आप सही लगा, आपने क्या करा, ड्रग को छोड़ दिया. क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम रेजिस्टेंस आ गया ड्रग को लेके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया. फॉर एग्जांपल टीबी
टीबी में क्या होता है, हम टीबी में ड्रग्स देते हैं, क्यों 2 हफ्ते तक लेना होता है हमें? हमें एक जो सॉरी जो हमें जो उसका जो है जो पूरा वो क्राइटेरिया उसको हमको पूरा क्यों करना होता है? बिकॉज वो उसके लिए मेडिसिन बनी हुई है। बट अगर आपने बीच में उसको छोड़ दिया तो क्या होगा? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली आपके ऊपर टीबी में कोई भी ड्रग काम नहीं करेगी, कोई भी एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेगी। एरर्स, प्रिस्क्राइबिंग एरर्स हो गए, डिस्पेंसिंग एरर हो गया फार्मासिस्ट से, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं उसमें कुछ एरर्स आ गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट गलत आया या कुछ भी आपका हो, या तो आपने क्या करा, ड्रग ले ली उसके अकॉर्डिंग, तो दिस आर एरर्स। एंड वी शुड प्रमोट द करेक्ट यूज एंड कंप्लायंस, दैट मीन्स द करेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन विद द कंप्लायंस। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, मेडिकल हिस्ट्री के साथ में उसको क्या है, दूसरी क्या प्रॉब्लम्स उसको हिस्ट्री में हुई है, दैट मीन्स उसने कौन सी पहले मेडिसिन ली है। एंड नेक्स्ट इज द लेबलिंग इशू। लेबलिंग इशू दैट मीन्स कि ड्रग पे जो लेबल्स होते हैं उनमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, कभी कभी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। दिस इज द मेन लाइक कम्युनिकेशन deficit in the for the from the MH marketing holder authorizations, labeling issues there. So what is the role of patient participations? Direct patient participation increase efficiency of PV, because अगर हमारे यहाँ का पेशेंट डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा ट्रीटमेंट में, आपको ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है डॉक्टर्स, ओके, देन पेशेंट पार्टिसिपेशन अगर हो रहा है दैट मीन्स कि आपको यू शुड इन्फॉर्म द फिजिशियन कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ओके। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डेफिनेटली आपको उस चीज के लिए दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एडीआर डेवलप होने वाला था आपने उसको बीच में रोक दिया। दिस इज द फार्माकोविजिलेंस प्रोसेस एंड रिकॉर्ड द पेशेंट कंसर्न। दिस इज द न्यू ड्रग सेफ्टी सिग्नल्स। मीन्स अगर कुछ भी पेशेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिजिशियंस क्या करते हैं, उसको सिग्नल्स के रूप में रिकॉर्ड करते हैं और वो उसको क्या करते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं प्रोफेशनली। देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर द गुड कम्युनिकेशन। डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, मिडवाइफ्स, आशा वर्कर्स एंड other healthcare workers, they should know the role of PV and reporting of ADRs. सिर्फ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है यहाँ पे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो नर्सेज है, जो फार्मासिस्ट है, जो मिडवाइफ्स है, दे शुड नो इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर्स। बट पुअर नॉलेज एंड ट्रेनिंग and poor emphasis, they decrease the pharmacovigilance communications and attitude towards the patients and PV. Means healthcare professionals attitude towards the patients and PV. मतलब ठीक है, हो गया आइडिया, चलो कोई बात, चलने दो, कंटिन्यू। दिस इज द नेगेटिव एटीट्यूड, ओके। फार्मासिस्ट को दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड। दिस इज नेगेटिव एटीट्यूड। पेशेंट्स लोड एंड लेस नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, दिस इज द मेन मेजर इश्यू इन इंडिया। पेशेंट्स लोड एंड लेस नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, ओके। एंड पुअर फैसिलिटीज, पुअर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज and low status and remuneration, because remuneration अगर पेशेंट्स को आप नहीं दे रहे, remuneration नहीं दे रहे हैं, या आप उनको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है आप उनको नहीं दे रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे उसको कमर्शियली रिपोर्ट। एंड पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट। सो communication in PV must be first strong and visible, precise, targeted, positive attitude, and should be valuable. Morality होनी चाहिए, behavior, good behavior, positive behavior, and follow up and revised. Then should be a dynamic communication, dynamic and scientific, in a scientific way, with the follow of modern standards and skills. So let's start with the process of reporting ADRs. ADR reporting is important because Dr. Valdemir told in Geneva 2005, dying from a disease is sometimes unavoidable. Okay,
but dying from an adverse drug reaction, it is unacceptable. अगर आप किसी डिसीज से किसी पर्सन की डेथ हो रही है, मे बी अवॉइड कर सकते हैं उसको समटाइम्स, बट एडवर्स ड्रग रिएक्शन से ही पेशेंट की डेथ होना, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल. सो ADR reporting is important because first condition, drug contribute 5 to 10% of all hospitals admissions. हर हॉस्पिटल में जितने भी एडमिशंस होते हैं उसमें से 5 to 10% ड्रग से होते हैं. दैट मीन्स कि पेशेंट जो एडमिट होता है वो ड्रग से ही एडमिट होता है. अराउंड 10 to 20% ऑफ ऑल इन पेशेंट्स में सफर अ सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन. सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन 10 to 20% इन पेशेंट जो हो रहे हैं, जो पेशेंट इन IPD डिपार्टमेंट्स में. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर अमंग द टॉप 10 कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी. टॉप 10 कॉज, दैट मीन्स कि अगर हम डेथ का कंडीशन देखें कि मॉर्टेलिटी क्यों किस रीजन से हुई है, टॉप 10 में हम डालेंगे तो टॉप 10 में ADRs आए कि ADR से डेथ हुई. Drug related morbidity and mortality expenses except to the $177.4 billion in the US in 2000. That means ड्रग से जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी हुई थी यूएस में, उनका 177.4 बिलियन कॉस्ट बढ़ गया था इकोनॉमिकली. ये यूएस की कंडीशन. सो लिमिटेशंस, ADR रिपोर्टिंग के लिमिटेशंस ड्यूरिंग द प्री मार्केटिंग फेज. As you know that the predefined populations and sample size was very less for the drug safety treatment in the clinical trials. Exclusion of the specific groups such as the pregnant women, children and elderly people. आपको भी पता है क्लिनिकल ट्रायल्स में हमने क्या करा, हमने एक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बना दिया. हमने क्या करा, हमने उसमें चिल्ड्रंस को नहीं रखा, हमने उसमें प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं रखा. अगेन मैं उसको कनेक्ट करता हूँ वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के साथ में. हमने चिल्ड्रंस को नहीं रखा था उसमें. हमें नहीं पता चिल्ड्रंस के चिल्ड्रन को अगर हम वैक्सीन देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो दिस इज द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. तो क्लिनिकल ट्रायल में तो आप चिल्ड्रंस को ले नहीं सकते. ठीक है, सैंपल साइज बहुत स्मॉल होता है उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री मार्केटिंग कंडीशंस. एंड लिमिटेड ड्यूरेशंस भी होते हैं बिकॉज मार्केट में क्या हो रही है, मार्केट में ड्रग नहीं गई है अभी तक, बट आफ्टर सम टाइम जब मार्केट में ड्रग है, फेज 4 कंडीशन में है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में मार्केट में चल रही है ड्रग. बट व्हाट अबाउट द कार्सिनोमा, कार्सिनोजेनिक अगर कंडीशन है तो क्या होगा, कैंसर डेवलप करेगा आफ्टर सम टाइम, लॉन्ग टर्म इफेक्ट. दिस इज द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट. सो pharmacovigilance should be there during the phase 4 conditions also. And limitations to evaluate drug interaction and contraindications, because जब प्री मार्केटिंग कंडीशंस में थी तो आपने पॉलीफार्मेसी तो नहीं दी थी वहां पे पेशेंट को, आपने तो एक ड्रग ली, आपने ड्रग में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया वहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स में. बट व्हाट अबाउट द ड्रग इंटरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, हाई बीपी भी है, वो हार्ट पेशेंट भी है, उसको डायबिटीज भी है, तो आपको तीनों मेडिसिन चलानी है उसको. बट व्हाट अबाउट द ड्रग इंटरेक्शन एंड कंट्राइंडिकेशन, वो तो आपको तब पता चलेगा जब मार्केट में ड्रग आएगी और जब पेशेंट लेगा उसको. बट अगर ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है और कंट्राइंडिकेशन से अगर मान लीजिए कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है तो रिपोर्ट तो करना ही होगा आपको. सो ADR इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट. अगेन लेक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द ADR रिपोर्टिंग सिस्टम. ADR रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें अवेयरनेस भी नहीं है यहाँ पे. And regarding the causality relationship between the drug and adverse event, that means the again adverse event and drug, adverse event before the development of ADR, that means कि starting में हमें पता ही नहीं है कि वो ड्रग रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, बट एडवर्स इवेंट एंड ड्रग के बीच में कॉजुअलिटी रिलेशनशिप तो डेवलप करना ही होगा. और डेवलप कौन करेगा, PV रिस्पॉन्सिबल्स, PV प्रोफेशनल्स करेंगे, बिकॉज क्योंकि उनके पास में जब एडवर्स इवेंट्स आएंगे ड्रग्स से रिलेटेड, देन दे विल check the causality of the reaction, adverse event. Then they categorized into this drug is responsible for this adverse event and it is the adverse drug reaction. Okay. Then lack of time and high workload, lack of understanding regarding importance of ADR reporting, complexity, actually believing that serious ADRs are well documented when the drug is released in the market, means सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर वेल डॉक्यूमेंटेड. ऐसा नहीं होता है. सीरियस एडवर्स रिएक्शन वेल डॉक्यूमेंटेड अगर होते तो डेफिनेटली प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में उसकी इंफॉर्मेशन होती. सो दिस इज द ड्रग
documented, it should be in the form of the black box one. Then lethargy and indifference and insecurity and fear of medications. So let's start with the how to report. Over 100 different reporting forms are available in worldwide, and they have developed individually by the each country to set up the pharmacovigilance centers. As the reporting system varies with the different region, the form used for the reporting is different regions also. For example, United States, they use the form 3500 and form 3500A. Again, this is the interview question. And United Kingdom, they use the yellow card. Australia, TGA, the regulatory authority is the TGA for Australia. They use the blue card. And Canada, that is Canada Vigilance Department, they use the Canada Vigilance reporting form. In India, they use the suspected ADR form. And universally, they use the SIOMS. So, where to report? Report should be sent to the adverse drug reaction monitoring centers. It is not practical to send the form directly to the center. Practically possible तो नहीं होगा कि आप directly AMC को आप भेजें. So क्या होता है इसमें? आपको AMCs के कुछ call centers होते हैं, उनकी websites होती है, और particularly AMCs hospitals में होते हैं, वहां पे आपको reports करना. Report should be stored securely to maintain the privacy. Reporters' information and patient information should be confidential. आपको कहीं पर भी पेशेंट्स का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, ना तो रिपोर्टर्स का नाम डिस्क्लोज करना है. Should be maintain privacy. So, what to report? Pharmacovigilance department. First, adverse drug reactions or event. Then, medication errors. Lack of efficacy. Lack of efficacy, that means कि अगर आपने कोई ड्रग ली है, आपको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. दिस इज द लेक ऑफ एफिकेसी. ये भी आपको रिपोर्ट करना है. एब्यूज एंड मिसयूज. अगर आपको लग रहा है कि ड्रग का मिसयूज हो रहा है या एब्यूज हो रहा है ड्रग का, तो वो भी आपको फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में करना है. लाइक ड्रग एब्यूज कंडीशंस में भी आपको पीवी डिपार्टमेंट्स में रिपोर्ट करना होगा. ड्रग इंटरेक्शन. अगर आपने कोई ड्रग ली है और आपके साथ अगर आपने डिफरेंट टाइप्स की ड्रग ले रहे हो और आपको ड्रग इंटरेक्शन फील हो रहा है कि हाँ इस ड्रग के साथ मुझे रैशेस हो रहे हैं, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, और लाइक मुझे नोजिया वोमिटिंग जैसे कुछ कंडीशंस हो रही है, तो आपको फार्मेसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना. व्हेन टू रिपोर्ट? अगेन दिस इज द रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द रिएक्शन. ओके. इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं जब भी इंटरव्यूज के जो होते हैं एचआरस वगैरह प्रोफेशनल जो होते हैं पीवी डिपार्टमेंट्स के, कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द रिपोर्टिंग, व्हाट इज द good criteria of ICSR. 4 points should be there. 4 points. First point, patient's information should be there. Patient information, that means the age, sex should be there. Name not necessary. This is the confidential. Okay. Second, product information. Product information, that means कि ड्रग की इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए. ड्रग की डोज क्या थी, ड्रग का फॉर्म क्या था, डोजेस फॉर्म क्या था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था. दिस इज द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. थर्ड आपका होगा कि एडीआर क्या था. एडीआर दैट मींस कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या थी. कंफ्यूज तो नहीं हो आप कि आपको रेशेस हुए थे, आपको नोजिया हुई थी या वोमिटिंग हुआ था. यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट. एंड फोर्थ ये होना चाहिए आपको कि आपका जो ड्रग है, ठीक है, और जो आपकी रिपोर्टिंग जो है, जो ड्रग है उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ और लिया, आपने ड्रग नहीं ली और आपने तब भी आप रिपोर्ट कर रहे हो. दैट मींस यू शुड बी कंफर्म अबाउट दैट. सो इट इज बेटर टू एडवाइज रिपोर्टर नॉट टू वेट अंटिल फाइनल रिजल्ट एंड इन्फॉर्म सच एज हॉस्पिटल लेटर्स आर रिसीव्ड, बिकॉज आपको वेट नहीं करना है. अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिपोर्ट कर देना है हॉस्पिटल्स में या एएमसी सेंटर्स में, या तो फिर कंपनीज के पीवी डिपार्टमेंट. So timeline, this is the every 6 months for the final 2 years after approval. That means कि अगर मान लीजिए कोई ड्रग है और वो मार्केट में गई है तो फर्स्ट 2 years में
अप्रूवल के बाद में हर 6 मंथ में उसकी सेफ्टी रिपोर्ट्स को किसको देना होगा? रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, कंपनीज को। दैट मीन्स कि मार्केट में अगर कोई ड्रग आई है तो फर्स्ट 2 years में हर 6 मंथ में उसको आपको देना होगा। इसको कहते हैं हम PSUR, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिकॉर्ड्स। That means the PSR should be submitted to the regulatory agencies and annually for subsequent. Then उसके बाद में हर एनुअली आपको एक उसकी सेफ्टी रिपोर्ट्स देनी होगी, लाइफ लॉन्ग कंपनीज को मैंडेटरी कर दी जाएगी। एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जब जब रिक्वेस्ट करे सेफ्टी रिपोर्ट्स के लिए, कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनके पास में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, टाइमलाइन से रिलेटेड मैं आपको कैरियर से चीज बताऊंगा आगे, जब लास्ट स्लाइड जो है वो मेरी कैरियर को लेकर रिलेटेड है कि टाइमलाइंस की इंपॉर्टेंस हमारे लिए अभी क्यों अच्छी हो गई, मतलब हमारे लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्यों बेस्ट हो गई, है ना। सबमिशन शैल बी मेड विद इन द 30 कैलेंडर डेज ऑफ द लास्ट डेज ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, दिस इज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। सो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिस ऑफ पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी एंड क्लीन। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये कैरियर से रिलेटेड है। हु रेगुलेट द ड्रग सेफ्टी? FDA, US FDA, EMA, this is the European medical agencies, यूरोप के लिए, MHRA for British, MHLW for the Japan, and CDSCO for the India. This is the regulatory agencies to assess the safety warnings, labeling changes, withdrawal. So let's just overview the reporting form of US FDA. This is the MedWatch form. This is the MedWatch form. US FDA, Scientific Regulatory and Public Health Agency, developed the MedWatch form. This is the reporting system for the adverse events, and healthcare professionals and consumers and patients can report voluntarily using this MedWatch form 3500. Okay. We will implement on the reporting forms also later. Then this is the MedWatch form, पेशेंट इंफॉर्मेशन, एडवर्स इवेंट। यहाँ पे आपको हर एक चीज इंफॉर्म करनी होती है। आपको एक जो मेन जो 4 है, देखिए मैंने 4 जो चीज बोला था, फर्स्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एडवर्स इवेंट होना चाहिए, थर्ड सस्पेक्टेड प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, एंड रिपोर्टर्स इंफॉर्मेशन। And European Medical Agency, this is the good pharmacovigilance practices, also known as the GVP. They develop the guidelines in ICH guidelines and different modules. मतलब कि इसमें क्या होगा, guidelines में different modules होते हैं, how to report, where to report, different criterias होते हैं, and we should cover the modules 1 to 16. And this is the yellow card for the UK. Now we start with the India. You know that India is incredible because over 1 billion population growing, and growing economy, second largest English speaking population in the world, and regulatory overall, and 4th largest exporter by the volume of drugs and biologics, especially generics, to the US. And US FDA offices in Delhi and Mumbai. So 4th largest exporter है हमारा इंडिया US के लिए जेनरिक मेडिसिन में, और US FDA ने हमारे यहाँ पे ऑफिस भी डेवलप करे हुए हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Ministry of Health and Family Welfare, Drug and Cosmetic Act and Rules, Drug and Cosmetic Act 1940 and 1945. They developed the Pharmacovigilance Program of India. So, formal drug safety monitoring system was proposed in 1986. Initially, formal drug safety monitoring system was proposed in 1986, and they developed the 12 regional offices, centers in nationwide. And in 1997, WHO Uppsala Monitoring Center established the National Pharmacovigilance Centers at AIIMS, New Delhi, and 2 other centers at Aligarh and Mumbai in 1997. In 2005, National Pharmacovigilance Program was sponsored by WHO. Okay,
with the Pharmacovigilance Advisory Committee located in the CIDISCO, New Delhi and other regional, zonal and peripheral centers. That means कि 1997 में सबसे पहले तो क्या करा, उपसाला मॉनिटरिंग ने हमारे यहाँ पे इंडिया में एक नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर एम्स में डेवलप किया, मतलब एक स्टेबलाइज किया, सिंपल एक छोटा सा सेंटर न्यू दिल्ली, और उसके बाद में 2 अदर सेंटर्स अलीगढ़ और मुंबई में। 2005 में उन्होंने नेशनल एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको कि कंप्लीटली WHO ने स्पॉन्सर्ड किया, एंड लॉन्च करने के साथ ही हमारे यहाँ की जो फार्माकोविजिलेंस एडवाइजरी कमेटी है जो कि सिडिस्को में, उसको वहां पे लोकेटेड किया न्यू दिल्ली में, और उसके जो सब ऑफिस जो है ओरिजिनल, जोनल और पेरिफेरल सेंटर्स में डेवलप 2005। 14 जुलाई 2010 में फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया PVPI was rolled out. Okay, and AMS was नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। मतलब 14 जुलाई 2010 में यहाँ पे फुल्ली एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हमारे यहाँ पे, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया PVPI was sponsored by WHO, एंड उसका हेड ऑफिस जो बनाया गया वो बनाया गया न्यू दिल्ली, उसको हम कहते हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। देन 15 अप्रैल 2011 में NCC was moved to Indian Pharmacopoeia Commission Ghaziabad, 15 अप्रैल 2011. So now NCC IPC is the NCC for the PVPI program. This is the summarized history of pharmacovigilance with relevance to the India. This is the 1747 first reported clinical trial by the James Lind providing the effectiveness of the lemon juice in preventing scurvy. 1937 में 107 children's death sulfonamide toxicity. Then aplastic anemia reported due to the chloroquine. Then global disaster due to the thalidomide disaster in 1961. 1963, 16th World Health Assembly recognized to repeat the action on ADR. 1968, WHO pilot research project for international drug monitoring. And 1996, clinical trial of global standards started in India. 1997, WHO sponsored India for the ADR reporting. 1998, PV initiated in India in 2002. 67th, National Pharmacovigilance Centers stabilized. Now, 2004, Pharmacovigilance program launched in India, and in 2019, PVPI. So let's check the flow chart. This is the expert accepted review panel. Okay, this is the PV coordinator. PV coordinator located in the AMC center. They send the ADR to the WHO PV, and expert national district investigation team, healthcare professionals connected with the patients. Patients sent to the national public health programs, and they send to the report to the WHO programs. WHO committee, the advisory committee, working on the ICSR, and they regulate to the WHO PV, that is the Uppsala Monitoring Center. Then again they back to the reports to the PV coordinators. Then this is the continuous process of PVPI, PVP programs. So, summary: pharmacovigilance play a key role in the healthcare system through the assessment, monitoring, and discovery of the infection among the drugs and their effects in human. Pharmaceuticals and biological medicines are designed to cure, prevent, and treat disease. However, there are also risks, particularly adverse reactions can cause serious harm to patients. And so, patient medications ADR monitoring required for the each medicines through the life cycle, throughout the life cycles. Okay. During development of a drug, such as the pre-marketing process, including the early stage of the drug design, clinical trials, and post-marketing surveillance. So this is the summary. So let's check the pharmacovigilance as career. Pharmacovigilance as a career, different companies offers the different posts. First post is the PV patient safety associates and PV officers. Then third one is the medical information department,
as a medical writer and medical reviewer. Suddenly, different companies offer these positions due to the pharma company offer this post like Novartis, Johnson & Johnson, GSK, Bayer, Pfizer, and many more. They offer the medical writer post, medical reviewer post, PV officers, scientific PV officers, and different companies, software companies also offer the post like Cognizant, TCS, Wipro, IQVIA, Cactus Life Science, and Reliance Life Science. Suddenly, how companies like offer this post? Because in 2016, the Ministry of Health and Family Welfare Department, they mandatory to report adverse drug reaction continuously. मैंने भी बताया था आपको लास्ट स्लाइड में कि जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च होने के 2 इयर्स के अंदर में आपको हर 6 मंथ में क्या करनी है, PSUR सबमिट करना कंपनीज को. दैट मीन्स कि कंपनीज ने फिर क्या करा, PV डिपार्टमेंट्स डेवलप किए. बट कुछ कंपनीज जो है उन्होंने आउटसोर्सिंग करी IT कंपनीज के साथ में, लाइक कॉग्निजेंट, TCS के साथ में, और उन्होंने IT कंपनीज ने अपना एक PV डिपार्टमेंट लॉन्च किया, डेवलप किया, और वहां पे उन्होंने PV प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना स्टार्ट किया. PV प्रोफेशनल्स का वर्क ये होता है कि जो भी फार्मा कंपनीज के, लाइक अगर नोवार्टिस का है या लाइक GSK या बेयर या फाइजर्स की है, फाइजर्स का फॉर एग्जांपल, फाइजर्स की जो आज की जैसे फाइजर की जो वैक्सीन है ना, तो फाइजर की वैक्सीन अगर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड अभी चल रही है कोरोना वैक्सीन, तो उनकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको ऑडिट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए फार्मा कंपनी फाइजर ने अपना एक PV डिपार्टमेंट्स बना के रखा है. तो PV डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेप्टिंग द ADRs, assessment, reporting to the WHO or regulatory agencies, because क्योंकि Pfizer is a company, they work under the regulatory agencies. like कौन सी regulatory agencies होगी, अगर मान लीजिए US में है तो US FDA, अगर यूरोप में है तो यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज, EMA, हमारे इंडिया में सिडिस्को. तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती है कि ये अपनी ड्रग की सेफ्टी रिपोर्ट्स, पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट्स हर 6 मंथ में या जब जब कंपनी रेगुलेटरी एजेंसी से मांगे उनको सबमिट करें. और सॉफ्टवेयर कंपनीज दे सेंड टू द रिपोर्ट्स टू द देयर क्लाइंट्स. सो मेडिकल राइटर्स and medical reviewers check the ICSRs and they enter the data into the softwares, which is known as the Vigiflow and Argus also. So finally, this is for the patient safety. Thank you. Thank you so much, sir, for sparing such intellectual session for us. We got a detailed information about PV and ADR assessment as well as reporting. We also want such intellectual session from you in future also. Thank you once again, sir, for such informative session. Thank you. Moving towards our next session, our next speaker is Dr. Adil Ali Shakur, former senior resident, Department of Pharmacology, IGMS, Patna. He is currently working as assistant professor, Department of Pharmacology, IGMS, Patna. He is MD in Pharmacology, gold medalist from BNM University. He has many research publications over ADR as well as pharmacovigilance and adverse drug monitoring. Now I am inviting Dr. Adil Ali sir for the next lecture. Sir, please. Good afternoon, all of you. Am I audible? Yes, sir. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So first of all, I would like to thank Dr. Das sir and Santosh sir for inviting me as a speaker through this platform on the auspicious occasion of National Pharmacovigilance Week. It gives me immense pleasure to see that the Pharmacovigilance Week is celebrated throughout the country, because we have been struggling a lot in few past years, working a lot in this field, trying to encourage healthcare professionals, pharmacists, and consumers, briefing them about pharmacovigilance and reporting of the ADR.
So it's very healthy and very good prospect to see that even from Bihar, Jharkhand, and the city Deoghar, people are acquainted and people are eager to know about pharmacovigilance, who are celebrating the Pharmacovigilance Week. So without taking much time, I would start with pharmacovigilance. So I won't go in much detail about the introduction as it has been aptly elaborated by Dr. Likhitkar. So just giving a brief introduction about pharmacovigilance. As we all know, and as it has been told by Dr. Das sir also and Dr. Likhitkar also, that pharmacovigilance or reporting of ADR is very important. All the adverse drug reaction of a drug that we come across during the clinical trials are not up to mark. There are many reactions which appear late. There are many reactions which take a long time to develop. So to assess, to visualize, to see, to note those reactions, pharmacovigilance or post-marketing surveillance is utmost important. That occurs in the phase 4 trial. And in that phase 4 trial, pharmacovigilance is conducted. So before registration and marketing of a drug in the country, its efficacy, safety, experience is based primarily on the clinical trials. However, some of the important reactions, such as those which take long time to develop or those which occurs rarely, may not be detected in the clinical trials. So in order to gain a comprehensive safety profile of the medicinal products, a continuous post-marketing monitoring system is essential, which occurs in the phase 4 of clinical trial. Now, Pharmacovigilance Program of India provides such a system to collate the data and use the interfaces to recommend for regulatory interventions, beside communicating risk to healthcare professionals and public. These robust data plays a vital role in analyzing and detecting new signals and updating the status of existing information on the drug profile. So we will start with the organogram of Pharmacovigilance Program of India. So adverse drug reaction monitoring centers are the backbone, or we can say that it is the base or the pillar for the Pharmacovigilance Program of India. Say, for example, the Department of Pharmacology of IGMS is the area monitoring center under Indian Pharmacopoeia Commission. So what all ADR we get from healthcare professionals, from pharmacists, from nurses, or from patients themselves, we process it to NCC, IPC Ghaziabad. So NCC is the coordinating center for Pharmacovigilance Program of India, which is located in Ghaziabad. Now NCC has different organizing committee, organizing functioning body. It has a steering committee, which looks or governs the Pharmacovigilance Program of India. It has the administrative power. Then there is working group, which is there for the technical issues and technical works. And there are 3 panels: quality review panel, signal review panel, and core training panel. So when we process or when we forward the adverse drug reaction reports to the NCC Ghaziabad, first of all, the quality review panel is there to check the quality of the reports, to check the completeness of the reports. And then signal review panel is there, which assesses the reports for the generation of signals. Now, what is signal? It has been told by Dr. Likhitkar earlier also, that is, it is the intimation of any new reaction which has not been previously documented. So these 2 panels are there, which assesses the reports and forwards it to working group, which further forwarded to steering group, and from here it is further forwarded to Uppsala Monitoring Center, which is located in Sweden, and to Central Drug Standard Control Organization through Ministry of Health and Family Welfare. Now, when these data reaches the CDSCO further analyzes this report, and on further analysis, it intimates, if it finds that there is generation of signal, or it finds that if there is any drug alert, then it intimates or notifies the different stakeholders of Pharmacovigilance Program of India. Now, who are these stakeholders? Stakeholders are the patients, the consumers. Stakeholders are the healthcare providers, that is the doctors, physicians, nurses, the pharmaceutical industries, and the pharmacist. So next, the pharmaceutical industries, national health programs, and professional bodies. Now, these 3 organizations can directly report the ADR to NCC.
They does not require AMC for reporting of the ADR. Next, we have CDSCO zonal centers, which are there to communicate directly with the ADR monitoring center. So this is the circle, this is the organogram, how the report flows from the patients to the ADR monitoring center, that is the AMC, to NCC Ghaziabad and to Uppsala monitoring center or CDSCO parallel. Now, who can report, how to report, and whom to report? So it starts from the patients or the consumer. The patients or the consumer first report any ADR they found to the healthcare professional or the treating physician or the treating doctor. Now, the consumer or the patient can either directly report to the NCC Ghaziabad through the toll-free number. They can directly report to the AMC if the AMC is situated in their city, or they can directly report to the treating doctor or the treating physician. The treating doctor or the treating physician can directly report to NCC Ghaziabad, or they can go through AMC, that is Adverse Drug Reaction Monitoring Center. All the report that reaches the AMC are further processes of forwarded to NCC Ghaziabad, and also the pharmaceutical industries. If they found any adverse drug reaction in the drug during the clinical trial, they can directly report it to NCC Ghaziabad or to CDSCO. Now, who can become the part of AMC? Now, Pharmacovigilance Program of India or IPC has a letter of intent, that is, they provides a letter, a format in which any organization, any medical college, any pharmaceutical company, any pharmacy college can show their interest in becoming the AMC, that is, becoming a part of this Pharmacovigilance Program of India or becoming a part of Indian Pharmacopoeia Commission as Adverse Drug Monitoring Center. So PVPI invites letter of intent from medical colleges, hospitals, corporate hospitals, premier pharmacy institutes to enroll under Pharmacovigilance Program of India. The advantages of being an AMC are health partners for the national-wide ADR reporting system, access to WHO Global Safety Database, VigiFlow to evaluate benefit risk assessment of the medicines, scientific publications, case studies, project related to pharmacovigilance. Eligible for financial, manpower assistance for training, conferences, telephone and internet expenses. Reduce India's dependency on Western world data for taking regulatory decision on the drug safety. So now, if for example, अगर किसी भी ड्रग का अगर कोई रिएक्शन होता है, तो हम लोग रेफर करते हैं कि बाहर कंट्रीज में यूएसएफडीए का उस ड्रग पे क्या स्टैंड रहा है, उस यूएसएफडीए ने उस ड्रग को बैंड किया, नहीं किया, होल्ड किया, नहीं किया. This happens why? Because we are much dependent upon the foreign countries for their data. अगर हमारा सिस्टम PVPI अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, if our data is strong, then we don't have to depend upon the Western world for the data. हम अपने CDSCO के रिपोर्ट से, PVPI और IPC के रिपोर्ट से ड्रग पे क्या डिसीजन लेना है, we can take it. So it can also help in boost public confidence in the use of medicine. So any institute, pharmacy college, medical college can become a part of Pharmacovigilance Program of India, can become AMC under IPC through this letter of intent, which is duly available on the website of Indian Pharmacopoeia Commission. Now, what is the legitimate regarding reporting of the adverse drug reaction? There is very misconception regarding the reporting of the ADR amongst the doctors, nurses, physicians, pharmacists, even consumers, that there may be any legal implication. So to make sure that submission of ADR does not have any legal implication on the reporter or on the treating physician or on the treating doctor, the confidentiality of the reporter and of the patient both are rigorously maintained. Submission of the report does not constitute that medical personnel or manufacturer of the product caused or contributed the reaction. ये एक misconception रहता है डॉक्टर्स में खास करके या पेशेंट्स में कि हमने कोई दवाई अगर प्रिस्क्राइब किया, उस दवाई से रिएक्शन हो गया, so I am responsible for that reaction. This is the misconception and it should be cleared. फार्मासिस्ट को ये कंफ्यूजन रहता है, ये मिसकंसेप्शन रहता है कि हमारे काउंटर से ये दवाई प्रोवाइड हुआ है, then it may be the reason that our pharmacy counter may be in the legitimate, but there is no such reason. किसी पे भी कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है, रिपोर्टर का डिटेल और पेशेंट का डिटेल दोनों कॉन्फिडेंशियल रहता है. Now who can report? Healthcare professionals, physicians, surgeons, nurses, dentists and pharmacists. Consumers or non-health professionals also. Pharmaceutical companies can also report. So how and whom to report? So reporting can be done by using the suspected adverse drug reaction reporting form. So there is a form which has been developed by IPC. We can report by using this form, which is duly available on the website of Indian Pharmacopoeia Commission, www.ipc.gov.in, and also on the website of CDSCO to report an ADR. So we can download the ADR reporting form from the website. A reporter can submit the ADR form
to the nearest ADR monitoring center if AMC happens to be in that city of the PVPI, or if AMC is not available in that city, then the consumer or the reporter can directly report the adverse drug reaction to NCC Ghaziabad, either through the email or through the helpline number. Now, when we are talking about Jharkhand, there are two AMCs in the Jharkhand currently working. One is in the Department of Pharmacology of RIMS Ranchi, Rajendra Institute of Medical Sciences, and another one is Department of Pharmacology in Patliputra Medical College, Dhanbad. So if any reaction happens to be in Jharkhand, then they may report to the nearest AMC, nearest city in Ranchi or Dhanbad, or they can directly report it to the NCC Ghaziabad through this toll-free number. Now, to just have a brief view about the ADR reporting form. So this is the suspected adverse drug reaction reporting form version 1.3, which is available on the website of IPC and CDSU. It has been divided into 4 groups. Group A includes the patient information, in which there are 4 columns: patient initial, age, gender, and weight. Now here, patient initial. So this is the confidentiality is maintained in a way. अगर किसी patient का नाम, for example, Adil Shakur, if it's my name, so there will be not entry of the full name. इसमें हम लोग सिर्फ patient initial use करते हैं. First letter of the Adil, that is A, and Shakur का S. So AS is used. So किसी का भी नाम है, first letter of the surname and the title name is used and not the full name. तो इससे confidentiality of the patient जो है वो maintained रहता है. दूसरा जो पार्ट इसको डिवाइड किया गया सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन, इसमें हम लोग रिएक्शन का डिटेल्स देते हैं. डेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टेड, रिएक्शन किस डेट में स्टार्ट हुआ, किस डेट में रिकवरी हुआ, मतलब रिएक्शन कब टर्मिनेट हुआ, एंड डिस्क्राइब रिएक्शन और प्रॉब्लम. सो दिस कॉलम इज गिवन. अपने लैंग्वेज में हम लोग केस समरी इसमें लिख सकते हैं, सारा डिटेल इसमें लिख सकते हैं कि कौन से दवाई से हुआ, कितने घंटे बाद हुआ, कितने मिनट बाद हुआ, अगर रिएक्शन हुआ तो उसके लिए हम लोग क्या दवाई दिया, रिएक्शन कब टर्मिनेट हुआ. ऑल दिस डिटेल्स आर गिवन इन दिस कॉलम. Then section C involves the suspected medications. कौन से दवाई suspected है कि इससे reaction हुआ होगा. तो इसमें नेम है, या तो ब्रांड जेनरिक जो भी अवेलेबल रहता है वो हम लोग इसमें लिख देते हैं. मैन्युफैक्चरर इफ इट इज नोन, पैच नंबर, एक्सपायरी डेट, डोज, रूट यूज, फ्रीक्वेंसी, थेरेपी ऑफ द डेट्स, इंडिकेशन किस कंडीशन के लिए दिया गया है, एंड कोजालिटी असेसमेंट. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलम देखते हैं एक्शन टेकन. अगर किसी ड्रग से रिएक्शन हुआ तो उस रिएक्शन के रिस्पॉन्स में क्या किया गया. ड्रग को विड्रॉ किया गया, ड्रग हमने रोक दिया, या उस ड्रग का डोज बढ़ाया गया, ड्रग का डोज को रिड्यूस किया गया, डोज चेंज नहीं किया गया, या फिर अननोन. तो इसमें जो भी एप्लीकेबल होगा उस पर हम लोग टिक लगा देते हैं. नंबर 10 इंक्लूड्स रिएक्शन रीअपियर्ड आफ्टर रीइंट्रोडक्शन. और दिस इज समथिंग दैट इज डन बाय द ट्रीटिंग फिजिशियन. रीइंट्रोडक्शन मतलब कि अगर हम किसी पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ड्रग ए से उसको रिएक्शन हुआ होगा, तो उसको हमने रोका इसलिए ये देखने के लिए कि रिएक्शन सबसाइड हुआ कि नहीं. अगर रिएक्शन सबसाइड हो गया तो फिर हमने उसे रीइंट्रोड्यूस किया. तो दिस इज नोन एज रिएक्शन रीअपियर्ड आफ्टर रीइंट्रोडक्शन. तो अगर ऐसा किया गया है ट्रीटिंग फिजिशियन की तरफ से तो इसमें यस करते हैं, नहीं किया गया तो नो करते हैं. देन कॉन्कोमिटेंट मेडिसिन प्रोडक्ट. तो जरूरी नहीं है कि सस्पेक्टेड मेडिकेशन से ही हुआ हो सकता है कि कोई पेशेंट को अगर डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज की दवाई चल रही है, हाइपरटेंशन की दवाई चल रही है, हो सकता है हाइपरटेंशन की दवाई से हुआ हो, लेकिन कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन साथ में क्या क्या चल रहा है वो हम लोगों को मेंशन करना जरूरी है, टू रूल आउट कि अगर हाइपरटेंशन की दवाई को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसी से रिएक्शन हुआ या डायबिटीज की दवाई से हुआ. सो ये आता है ग्रुप सी में. उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है, फॉर एग्जाम्पल लैब डिटेल्स वगैरह है, तो वो इसमें हम लोग लिख सकते हैं. एंड देन कम्स द रिपोर्टर डिटेल्स. तो रिपोर्टर डिटेल्स में जो प्राइमरी रिपोर्टर है, मतलब जिसके पास रिपोर्ट फर्स्ट आया, that becomes the initial reporter, और उसका डिटेल यहाँ पे जाता है. that may be the treating physician, that may be pharmacist, that may be the doctor or the nurses. So this is about the ADR reporting form. इधर जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं 12, 13 एंड 14, तो अगर कोई टेस्ट इंफॉर्मेशन है, अगर उसका कोई लैब टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट है, सिटी स्कैन है, एनीथिंग, तो उसको हम लोग इसमें पुटअप करते हैं. कोई रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री है, उसमें हम लोग 13 नंबर कॉलम में पुटअप करते हैं. नाउ नेक्स्ट कम द सीरियसनेस ऑफ द रिएक्शन. तो सीरियस रिएक्शन था कि नहीं था ये हम लोग कैसे जज करेंगे. तो इतने सारे इसमें चेकलिस्ट दिए हुए हैं, उसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे. डेथ हुआ, नहीं हुआ, जो इसमें फिट बैठता है उसमें हम लोग टिक कर देंगे. हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, टिक कर देंगे. डिसेबिलिटी, कॉन्जेनाइटल एनोमली, या फिर कोई अगर इम्पेयरमेंट हुआ, कोई अगर परमानेंट डैमेज हुआ, वो हम लोग करते हैं. देन आउटकम ऑफ द रिएक्शन. जो पेशेंट को रिएक्शन हुआ था उस रिएक्शन का आउटकम क्या हुआ, रिकवर किया या रिकवरिंग फेज में है, रिकवर अभी नहीं किया है, फैटल
डेथ हो गया पेशेंट का, या रिकवर्ड विद सीक्वेल, परमानेंट कोई एबनॉर्मलिटी उसको हो गया, और इट इज अननोन. सो दिस इज द सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म, जिसको हम लोग फिलअप करके या तो हार्ड कॉपी एएमसी में हम लोग सबमिट कर सकते हैं, या फिर इसके हार्ड कॉपी को हम लोग मेल कर सकते हैं आईपीसी को, और अगर नहीं हो तो आईपीसी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके ये सारा डिटेल्स हम लोग बता सकते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस टू द सबमिटेड इंफॉर्मेशन. ये जो रिपोर्ट हम लोगों ने फिलअप किया आईपीसी को या एएमसी को भेजा, तो क्या होता है उसके बाद. The medical colleges and the hospitals are the cornerstone of the PVPI. They act as AMC, that is Adverse Drug Reaction Monitoring Center, which are responsible for collecting the individual case safety reports and performing the follow-up with the patient to check completeness of the report as per the standard operating procedures. The ICSR data is then uploaded in the Vigibase by using the Vigiflow software, which is sent to NCC. अब कोई भी रिपोर्ट जो AMC में आता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ IGMS इज द AMC. हमारे यहाँ जो भी रिपोर्ट आता है, सो देयर इज ए वेब पोर्टल, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग विजीफ्लो बोलते हैं. उस सॉफ्टवेयर से हम लोग वो रिपोर्ट को उस सॉफ्टवेयर में पुटअप करते हैं, और उस रिपोर्ट को फिर फर्दर हम लोग एनसीसी गाजियाबाद भेजते हैं विजीबेस में. तो दो सॉफ्टवेयर यूज होता है, विजीफ्लो एंड विजीबेस. विजीफ्लो का जो एक्सेस होता है वो एएमसी के पास रहता है, जो भी रजिस्टर्ड एएमसी है आईपीसी के अंडर में, उसको एक आईडी पासवर्ड दिया जाता है, जिसके थ्रू रिपोर्ट हम लोग फिलअप करते हैं थ्रू द वेब पोर्टल, और उसको हम लोग फिर उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर भेजते हैं थ्रू आईपीसी. द क्वालिटी असेसमेंट विल बी परफॉर्म्ड एट एनसीसी. द डेटा इज फर्दर सेंट टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, व्हिच मेंटेन्स द ग्लोबल ड्रग सेफ्टी डेटाबेस. तो जो डिटेल हम लोग भेजे वो आईपीसी के डेटाबेस में जाता है, और साथ साथ WHO को भी जाता है टू मेंटेन द ग्लोबल डेटाबेस. द रिपोर्ट्स आर पीरियडिकली रिवाइव्ड बाय एनसीसी PVPI. The information is submitted to the steering committee of the PVPI, constituted by Ministry of Health and Family Welfare. Sorry. The committee is entrusted with the responsibility to review the data and suggest any intervention that may be required. तो जो regulating authority होती है CDSU, वो इस रिपोर्ट को एसेस करती है, और अगर उसको लगता है कि इस रिपोर्ट में अगर ऑथेंटिसिटी है, क्रेडिबिलिटी है, then it takes the necessary steps. Now why to report? रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है? To ensure the safety of the patients taking medicines, to reduce the risk associated with the use of medicines, to help regulatory authority make vital policy decisions regarding the safe use of medicines. Now these are the some common examples, some of the recent examples of the drug safety alerts which has been issued by Indian Pharmacopoeia Commission. जो भी रिपोर्ट हम लोग आईपीसी को भेजे, आईपीसी ने उस रिपोर्ट को एसेस किया. एसेस करने के बाद it came to the conclusion that these drugs are causing some serious reactions which needs some drug safety alerts. तो जैसे कि रिसेंट एग्जाम्पल है, अगस्त के महीने में सोफोस्पोविर जो हेपेटाइटिस में यूज होता है, उसमें बार बार देखा गया कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किया जा रहा है. तो आईपीसी ने एक ड्रग सेफ्टी अलर्ट इशू किया फॉर ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हॉस्पिटल्स, फार्मासिस्ट, ट्रीटिंग डॉक्टर्स, कि जब भी आप ये ड्रग दें, सो कीप इन माइंड दैट इट मे कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. इट हैपेंड इन द लास्ट मंथ, दैट इज अगस्त में हुआ. देन इटोरिकॉक्स व्हिच इज यूज्ड एज अ पेन किलर, इसमें देखा गया ड्रग सेफ्टी अलर्ट इशू किया गया फॉर एक्यूट जनरलाइज्ड एक्जिथेमेंटेसिस पस्टुलोसिस. टॉर्सेमाइड जो ब्लड प्रेशर में यूज किया जाता है फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, देखा गया कि ड्रेस सिंड्रोम कॉज किया. रोजुवास्टैटिन व्हिच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग फॉर स्टैटिन्स, एज अ स्टैटिन जिसको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा रहता है, डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं. तो रैप्टोमाइलोसिस में देखा गया. जिंक जो कि अभी कोविड में बहुत कॉमनली यूज हुआ था, उसमें देखा गया कि वो डायरिया करा रहा है. सैलिसाइलिक एसिड जो एक्ने वल्गैरिस एनॉल में यूज किया जाता है, इट कॉज द फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन. तो ये कुछ रीसेंट एग्जांपल्स हैं जो रिपोर्ट हम लोगों ने आईपीसी को भेजा. आईपीसी ने उस रिपोर्ट को एसेस किया ऑल ओवर द इंडिया. उस रिपोर्ट को एसेस करने के बाद उसकी जो स्टीयरिंग कमेटी है, कोर कमेटी है, सिग्नल रिव्यू पैनल है, वो सब एक कंक्लूजन पे आए कि वी हैव टू इशू ड्रग सेफ्टी अलर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रग, क्योंकि इससे बार बार ये रिएक्शन हो रहा है व्हिच इज नॉट बीन प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड. तो आईपीसी ने ये ड्रग सेफ्टी अलर्ट इशू किया. Then signal generated. Drug safety alert was an alert for the physicians, for the treating doctor that those drugs may cause those reactions. लेकिन जब सिग्नल रिव्यू पैनल उस रिएक्शंस को पास कर देते हैं, that becomes the signal.
सिग्नल इन ड्रग्स का जनरेट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मार्च में टिनिडाजोल जो बहुत कॉमनली यूज होता है एमेबिक इन्फेस्टेशन में, उससे जो रिएक्शन हुआ वो देखा गया फिक्स्ड ड्रग इरप्शंस। अब इस पे सीडीएसयू ने क्या एक्शन लिया? सीडीएसयू ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को डायरेक्शन दिया कि जो लीफलेट होता है, आप देखे होगे कभी भी कोई दवाई अगर आप निकालते हैं तो उसके अंदर एक लीफलेट रहता है जिसको हम लोग प्रेस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन लीफलेट बोलते हैं, पीआईएल बोलते हैं, जिसमें सारा डिस्क्रिप्शन ड्रग के बारे में रहता है, उसका साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट के बारे में रहता है। तो टिनिडाजोल से सिग्नल जनरेट हुआ फिक्स्ड इरप्शन का, तो आईपीसी ने सीडीएससीओ को इंटीमेट किया और सीडीएससीओ ने एक्शन क्या लिया? फार्मास्यूटिकल कंपनी को डायरेक्ट किया टू इंक्लूड दिस रिएक्शन इन द लीफलेट ऑफ टिनिडाजोल। सेम हैपेंड विद ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल जो पेन किलर के लिए यूज किया जाता है, तो इससे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन का सिग्नल जनरेट हुआ दैट वाज यूरिनरी रिटेंशन। तो अगेन सीडीएसयू ने एक्शन लिया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को उन्होंने इंटीमेट किया टू इंक्लूड दिस रिएक्शन इनटू द लीफलेट ऑफ ट्रेमाडोल। सेफोटॉक्सिन जो सेफालोस्पोरिन में बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है वो यूज होता है, उसके लिए भी ड्रग सेफ्टी अलर्ट इशू किया गया सीडीएसयू की तरफ से। ओसेल्टामिविर जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, इट नीडेड टू बी कॉज ब्रेडिकार्डिया, तो इसमें भी ड्रग सेफ्टी अलर्ट के तौर पे सिग्नल जनरेट हुआ और सीडीएसयू ने रिकमेंड किया फार्मास्यूटिकल कंपनी को टू इंक्लूड ब्रेडिकार्डिया इनटू द पीआईएल ऑफ द ड्रग लीफलेट। सेफेक्सिम इज अगेन वेरी कॉमनली यूज्ड सेफालोस्पोरिन फॉर इंफेक्शियस कंडीशन, तो इसमें भी सीडीएसयू ने सेम डिसीजन लिया। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, नाउ दिस इज द वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग। हम लोग जानते हैं पीपीआई बहुत कॉमनली यूज होता है क्योंकि गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है। ओमेपेराजोल, पैंटोपेराजोल, रैबेपेराजोल, ऑल दीज ऑफ ड्रग। तो इससे सिग्नल जनरेट हुआ एक्यूट किडनी इंजरी, जो आईपीसी ने रेकमेंड किया सीडीएससीओ को और सीडीएससीओ ने इसको फाइनलाइज किया और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंटीमेट किया टू इंक्लूड दिस रिएक्शन इनटू द लीफलेट ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सो दिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ रिपोर्टिंग। कोई भी रिपोर्ट हम लोग अगर भेजते हैं तो उससे सीडीएससीओ को डिसीजन लेने में आसान हो जाता है कि या तो उस ड्रग के लीफलेट में उस रिएक्शन को ऐड किया जाए या ड्रग सेफ्टी अलर्ट इशू किया जाए, या अगर बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है तो उस ड्रग को या तो सीडीएसयू होल्ड करने के लिए बोलती है या परमानेंटली स्टॉप करने के लिए बोलती है। नाउ दीज आर द ऑर्डर्स इशूड बाय सीडीएसयू, जैसे लैमिवुडीन 2020 में हियरिंग लॉस कराया, क्लोरोक्विन ने स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कराया 2020 में। सो दीज वर द ऑर्डर्स दैट वाज इशूड बाय सीडीएसयू टू ऑल द फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी ये ड्रग प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती हैं, उन लोगों को डायरेक्शन दिया गया। Proton pump inhibitors caused acute kidney injury. Diclofenac caused Nichols syndrome. Cefixime caused mouth ulceration. Artemether lumefantrine, which is used for the treatment of malaria, caused Stevens-Johnson syndrome. Carbamazepine caused Rett syndrome. Meropenem, which is a high-end antibiotic, it caused hypokalemia. Amlodipine, which is very commonly used antihypertensive drug, it caused alopecia. Amlodipine again caused gingival hypertrophy. So these were the orders that was issued by CDSCO. Now coming upon to the our AMC, that is AMC of IJMS Patna, how we contributed in this signal generation. 2015 में carbamazepine एक ड्रग है which is used for the treatment of epilepsy. 2015 में CDSCO ने सिग्नल जनरेट किया कार्बामाजेपिन के लिए, that carbamazepine causes स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। 2015 के पहले ये नहीं पता था कि कार्बामाजेपिन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करा सकता है। 2015 में सीडीएससीओ ने इस चीज को स्टैंप लगाया, आउट किया कि इट मे कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड दिस रिएक्शन वाज इंक्लूडेड इन ऑल द लीफलेट ऑफ द ड्रग। नाउ हाउ वी कंट्रीब्यूटेड? इट हैपेंड टू बी दैट इन 2014 and in 2015 two reports were sent by our AMC IJMS to IPC regarding carbamazepine causing Stevens Johnson syndrome. तो हमारे यहाँ से 2 रिपोर्ट गया था 2014 में, 2015 में, सेम रिएक्शन कार्बामाजेपिन व्हिच कॉजेस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ऐसे ही ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द इंडिया से बहुत से रिपोर्ट्स गए होंगे व्हिच मेड सीडीएसयू इजी इन टेकिंग द डिसीजन टू इंक्लूड दिस रिएक्शन इन द लीफलेट, दैट इज कार्बामाजेपिन कॉजिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। Now coming upon to the current status and activities of PVPI, there has been significant increase in ADR reporting form 3208 in 2010। जब PVPI स्टार्ट हुआ था 2010 में, तो एनुअल रिपोर्ट जो था दैट वाज 3208। नाउ कमिंग अपॉन टू 2021, देयर इज 52875 रिपोर्ट्स इन द डेटाबेस ऑफ PVPI। Currently, India is the 7th largest contributor to SALA Monitoring Center International Drug Safety Database। तो वर्ल्ड वाइड जो डेटा जाता है उसमें इंडिया होल्ड्स द 7th रैंक। जो हम लोग डेटा यहाँ से आईपीसी को भेजते हैं वो पैरेलली यूएमसी में भी जाता है।
Now, currently 396 AMC in India are functioning under Pharmacovigilance Program of India. Till now, more than 21 newsletters has been released by PVPI. Current status of PVPI includes more than 100 drug alerts, more than 27 changes in the label of the drug or the packaging insert, and more than 6 signal generation has been done for a drug. Keeping in view the progress and contribution made by NCC IPC for drug safety, WHO on 18 July 2017 recognized IPC PVPI as WHO Collaborating Center for Pharmacovigilance Program of India. Now, in Bihar, the AMC of IGIMS was the first AMC of the Bihar, and this is the letter that we got from Pharmacovigilance Program of India. Now, there are some initiatives that have been taken by AMC of IGIMS, such as this is the OPD prescription. जो OPD में patients आते हैं, उनका ये prescription है, जो उन्हें दिया जाता है. What we have done that we have included the toll-free number and the number of our department for reporting of any adverse drug reaction in the vernacular language. हमने यहाँ पे हिंदी में एक ऐड करवाया footnote में कि अगर किसी भी ड्रग से पेशेंट को कोई भी रिएक्शन होता है, then they may call to this toll-free number or they may call on the landline number of our department. So this is the initiative that has been taken by the AMC of IGIMS. Now there is also a resolution that has been passed by the Board of Governors of IGIMS that all the students of MBBS, all the senior residents, junior residents, it is mandatory for them to report any adverse drug reaction they come across during their ward duty, during their training period. So it has been passed by the Board of Governors of the IGIMS. Now there are some activities that has been conducted by our AMC, such as distribution of PVPI newsletters and PV booklets, pamphlets to healthcare professionals and consumers during the health exhibition of the IGIMS. Regular training are being given to undergraduate medical students, nursing students, medical laboratory technology students regarding pharmacovigilance and how to report the ADR reports. Now regular awareness is being done about the ADR reporting amongst the common people through the regional newspaper on regular basis with display of IPC's helpline number. So regular basis पे हमारे यहाँ जो regional newspaper है, हम लोग उसमें कुछ ना कुछ एक advertisement या कुछ ना कुछ एक message देते रहते हैं कि अगर किसी को भी कोई reaction हो, then they should report the reaction either to the AMC of IGIMS or directly to the PVPI. Coming upon to conclusion, the pharmacovigilance is a flourishing discipline offering immense opportunity to safeguard public health and reducing cost of the healthcare system. From small beginnings with right knowledge and practice, it can help in minimizing or preventing ADRs through early detection and effective communication. So the take-home message, pharmacovigilance system has widely increased awareness regarding ADR reporting, but still there is a long mile to go and a lot has to be done. Healthcare professionals and pharmacists are potential source for ADR reports. Practice of spontaneous reporting should be voluntarily inculcated amongst healthcare professionals and pharmacists for safety of the patients. That is all from my side. Thank you. Thank you so much, sir. Thanks a lot for sharing, having shared with us such important information and facts about pharmacovigilance. If anybody has any related question about pharmacovigilance, you can put forward your questions to sir. Sir, good afternoon, sir. Sir, I want to know about the CDSCO full form. Full form of CDSCO. It's Central Drug Standard Control Organization. ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है जो बहुत सारे सेक्शंस को डील करता है, जिसका एक छोटा सा पार्ट फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया भी है. Okay, sir. Thank you. Any more questions? Anybody? I guess that's all for this time. Okay. Good morning, sir. Sir, my question is that, sir,
जिस कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम होता है सर, वो रिपोर्ट करते हैं कि उनको वो प्रॉब्लम है, तो सर मतलब कि बिना बस उस रिपोर्ट के बेसिस पे असेस किया जाता है कि पेशेंट को कैसे फिर ट्रीट करना चाहिए या फिर क्या उसका एडवर्स इवेंट है, तो वो डायरेक्टली तो नहीं ना इंटरेक्ट करते हैं सर पेशेंट से। नहीं, सॉरी, क्वेश्चन मतलब पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं, आप रिपीट करेंगे प्लीज क्वेश्चन वापस से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पेशेंट से वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो सर उनको मतलब कि बस रिपोर्ट के बेसिस पे पता चलता है कि क्या एडवर्स इवेंट्स वगैरह है। डायरेक्टली एक्चुअली कनेक्शन नहीं होता है पेशेंट्स के साथ में, बिकॉज क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल होता है, तो पेशेंट्स की कुछ भी इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग्स में नहीं जाती है, ताकि वो एक्चुअली ब्लाइंडेड होता है, बोथ साइडेड ब्लाइंड होती है चीजें। रिपोर्टर्स की इंफॉर्मेशन उनके पास में नहीं होती, ना तो उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर होता है, और जो टीम है वो उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती। दिस इज द मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके सर, एंड इसमें बट कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए ये ब्लाइंडिंग किया जाता है। और जो आपका जैसे क्वेश्चन है कि इंटरेक्शन नहीं होता है, तो द इंटरेक्शन इज द डेटा। जो डेटा पेशेंट को अगर किस दवाई से रिएक्शन हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन कि उसके साथ कौन कौन सी दवाई चल रही है, तो डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो भी पेशेंट है, अगर किसी भी दवाई से उसको रिएक्शन हुआ है, वो सारा डिटेल्स या तो एएमसी को या एनसीसी को अगर बताते हैं, सो इन ऑन द बेसिस ऑफ दोज डेटा, किस ड्रग से रिएक्शन हुआ, उस ड्रग के साथ कौन कौन से ड्रग चल रहे थे, ड्रग देने के कितने देर बाद रिएक्शन हुआ, एंड ऑल दोज स्टफ। अगर ड्रग हमने होल्ड किया तो रिएक्शन रुका या नहीं रुका, सो ऑल दोज थिंग्स, इसके बेसिस पे फिर डिसाइड किया जाता है कि वो ड्रग से रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या देयर इज एनी फिजियोलॉजिकल कॉज। सो दिस इज, ये कोई जरूरी नहीं है कि देयर शुड बी अ फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द पेशेंट एंड द एएमसी और द आईपीसी। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और डेटा जितना क्रेडिबल होगा, जितना ट्रांसपेरेंसी उसमें होगा, उतना रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इंटरेक्शन जो होता है एएमसी में, जो फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट्स होते हैं जो कि उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सबसे पहले पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, या फिर जो फिजिशियन जो रिपोर्ट कर रहा है वो उनके साथ में इंटरेक्शन का होता है। बट इन द फॉर्म ऑफ एनी लाइक फॉर्म में, जो रिटर्न फॉर्म में कहीं पर भी ना तो पीवी एसोसिएट ना तो फिजिशियन उस पेशेंट की डिटेल दे सकते हैं। हाँ, बट बिफोर रिपोर्टिंग टू द आईपीसी, पीवी एसोसिएट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट्स के साथ में कनेक्ट करके या तो फिर उनका फॉलोअप लेके वो चेक करे कि क्या वो सच में हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियली एएमसी पर्संस की, जो कि पीवी एसोसिएट्स होंगे या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, वो उस पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। देन जब उनको कंफर्म होता है तो फिर वो भेजते हैं। बट जब अगर मान लीजिए कोई टोल फ्री नंबर से आईपीसी के पास में कॉल आता है, तो वो डाटा को वो कंफर्म करते हैं कि वो जो रिपोर्टिंग्स दे रहे जो पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, तो वो आपसे हर एक डिटेल्स मांगेंगे, और अगर उनको लग रहा है कि वो 4 मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, रिपोर्टर्स इंफॉर्मेशन, सस्पेक्टेड मेडिकेशंस एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये 4 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हैं, तो वो आपकी रिपोर्ट्स को कंफर्म करके वो आगे भेज दें। यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा पेशेंट। Clear? Thank you so much, sir. And so one more question, that what is the difference between adverse event and adverse drug reaction? Adverse event and adverse drug reaction. Yes, sir. Adverse event, that means the event. This is the adverse event. But in the initial condition, drug is not develop a relationship between the adverse event and drug. That means it may be happen रिस्पॉन्सिबल और मे बी नॉट। मतलब कि इनिशियली अगर हमें पता चल रहा है कि कोई ड्रग से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो जब तक उस ड्रग और कार्डियक अरेस्ट के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बनता है, मतलब कि वो असेसमेंट के बाद बनता है, तो कैजुअलिटी असेसमेंट की एक टीम होती है, जो कमेटी होती है, जैसे सर ने बताया भी, आदिल सर ने, कि एक रिव्यू कमेटी होती है, सिग्नल कमेटी होती है, तो उनके पास में जो इनिशियली जो रिपोर्ट आती है वो एज ए एडवर्स इवेंट आती है, और जब वो डेवलप कर देते हैं कि हाँ ये ड्रग ही रिस्पॉन्सिबल है इस एडवर्स इवेंट के लिए, तो उस ड्रग को कनेक्ट होने के बाद में वो एडवर्स इवेंट कन्वर्ट हो जाती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। दैट मीन्स कि उनके बीच में एक साइंटिफिक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, सिग्नल।
Anyone else? And sir, what is SUSAR? SUSAR is suspected unexpected serious adverse reaction. Suspected unexpected serious adverse reactions. SUSAR is the form, actually, is a name. Sir, I have a question to Dr. Adil Sakur, sir. Dr. Adil, sir. Yes, please. So my question is that in ADR, we are saying that there are 3 categories: mild, moderate, and severe. So in that category, you are recording the responses or you are generating the signals. Sir, is it what are the problems you are facing? Because it is very difficult to differentiate mild and moderate ADR. Severe is another condition. Because for most of the cases, as we also teach or we experience that in many of the drugs, nausea, vomiting, diarrhea, these are some of the associated problems. They generally are involved with the drugs. So how a patient can report to you that, sir, I am having this problem, or it may be a serious condition, or it can be a take it granted. Because just now, sir, you have given an example that one of the vasodilators, you have cited that one of the vasodilators is having a problem associated, that is your alopecia. So maximum vasodilators are having the same functions, because pharmacology says that the vasodilator drugs will dilate the blood vessels, and accordingly all the hair tonics, these drugs are having the same pharmacological actions. Yes. So after getting the systemic therapy, now it has been documented that after using these drugs or antihypertensive drug, the patient may get alopecia. So is it serious? Or because alopecia is not a serious condition, but hypertension is a serious condition. So you have taken it as a ADR. So my question is that at which point the thing is कि mild, moderate, severe जो 3 categorization है, तो इसका एक स्केलिंग है. और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है कॉजालिटी असेसमेंट. कॉजालिटी असेसमेंट जो है फॉर्म में एक कॉलम था, उसको मैंने डील नहीं किया बिकॉज इट इज अ वेरी टेक्निकल थिंग. तो कॉजालिटी असेसमेंट हम लोग करते हैं किसी भी ड्रग का. कोई भी रिपोर्ट अगर हम लोगों के पास आया, देन वी एनालाइज कि ये रिएक्शन उसी ड्रग से हुआ है या नहीं हुआ है, या ये ड्रग का कितने हद तक रिलेशन है कि ये रिएक्शन कराया होगा. सो इट इज डन बाय कॉजालिटी असेसमेंट. तो कॉजालिटी असेसमेंट करने के लिए एक स्केलिंग है, एक ग्रेडिंग है, जिसके रेफरेंस हम लोग लेते हैं. इट इज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनर. 10-15 क्वेश्चंस रहते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग फिल्टर करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं कि ये ड्रग से ही रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. तो कॉजालिटी असेसमेंट को 4 ग्रेडिंग में डिवाइड किया गया है: सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल एंड अनसर्टेन. सर्टेन सबसे हाई ग्रेड हो गया, मतलब कि इसी ड्रग से रिएक्शन हुआ हो. तो अब हम लोग उसमें फर्दर क्वेश्चंस करते हैं पेशेंट से. फॉर एग्जांपल उससे क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपने कोई ड्रग लिया, ड्रग ए लेने के कितने देर बाद आपको ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो पेशेंट बताएगा इतने देर बाद. फिर हम लोग पूछेंगे कितने टाइम तक ये ड्रग चला. फिर हम लोग पूछेंगे क्या ये ड्रग रोकने के बाद रिएक्शन कम हुआ या नहीं हुआ, तो वो बोलेगा हाँ कम हुआ. फिर हम लोग उसमें करते हैं रीचैलेंज, मतलब कि ड्रग को फिर से हम लोग देते हैं. तो अगर ड्रग फिर से देने के बाद फिर से उसको वो रिएक्शन हुआ, देन दैट कंडीशन बिकम्स सर्टेन. सर्टेन मतलब कि इसी ड्रग से रिएक्शन हुआ है. अगर रीचैलेंज या री इंट्रोडक्शन नहीं किया गया, मतलब कि ड्रग को हमने रोका, जब रिएक्शन हो रहा है हमने री इंट्रोड्यूस नहीं किया, रिस्क नहीं लिया, और उसका रिएक्शन भी सबसाइड होने लगा, तो वो आ जाता था प्रोबेबल ऑब्लिक लाइकली के कंडीशन में. और इसी तरीके से अगर ड्रग हम लोग रोके भी नहीं और रिएक्शन खुद से कम हो रहा है, देन दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉसिबल. तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग स्केल हम लोग पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे और उसके आंसर के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये ड्रग का कितना % चांसेस है कि ये रिएक्शन कराया हो. दिस इज नोन एज कॉजालिटी असेसमेंट. दूसरा होता है सिवियरिटी असेसमेंट, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर. सिवियरिटी असेसमेंट भी हम लोग क्वेश्चनर बेस्ड करते हैं, जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, और उसमें हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन होने से पेशेंट को कितना हद तक नुकसान हुआ है. क्या ये रिएक्शन होने से पेशेंट एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, क्या पेशेंट एडमिट नहीं हुआ, क्या ये रिएक्शन के वजह से पेशेंट को उस रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए कोई दवाई लेना पड़ा. तो ये सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे माइल्ड है या मॉडरेट है, सीवियर. फॉर एग्जांपल अगर ड्रग ए लेने से
पेशेंट का रिएक्शन इतना सीवियर हुआ, हाइपोकलेमिया हो गया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके एनएस चढ़ाना पड़ा, नॉर्मल सलाइन चढ़ाना पड़ा। तो यहाँ पे पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, देन दैट बिकम्स सीवियर कंडीशन। अगर कोई पेशेंट को हाइपोकलेमिया तो हुआ, लेकिन हाइपोकलेमिया की वजह से उसको पानी नहीं चढ़ाना पड़ा, एनएस नहीं चढ़ाना पड़ा, ही इज गुड, लेकिन वो ड्रग रोकना पड़ा, देन दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट। ये मॉडरेट रिएक्शन था। अगर किसी ड्रग ए से पेशेंट को हाइपोकलेमिया तो हुआ, लेकिन इतना हाइपोकलेमिया नहीं हुआ कि ड्रग रोकना पड़े, लेकिन हाइपोकलेमिया हुआ, देन दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइल्ड। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं, क्वेश्चन पूछ करके पेशेंट से कि उसका सीवियरिटी किस हद तक गया, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। ये सारा डेटा कॉजालिटी असेसमेंट करके, सीवियरिटी असेसमेंट करके हम लोग भेजते हैं आईपीसी को। सिग्नल जनरेशन करने का काम आईपीसी का है। वो एक अलग फॉर्मूला है, सॉफ्टवेयर है, जिससे वो इंडिया से सारे रिपोर्ट्स जाते हैं, नेशन वाइड रिपोर्ट जाते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स को वो फॉर्मूला में सेट करके थ्रू सॉफ्टवेयर असेस करते हैं कि सिग्नल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। सिग्नल अगर जनरेट होता है तो वो फिर फर्दर सीडीएसईओ को रिकमेंड करते हैं। तो एएमसी लेवल पे हम लोग दो काम करते हैं, सिवियरिटी असेसमेंट और कॉजालिटी असेसमेंट। थैंक यू सर। सर इंडियन एडीआर क्या होता है सर? पार्डन? इंडियन एडीआर सर, और इसको सर हम लोग मार्केट में क्यों स्टॉक कर रहे हैं? ADR. यस सर। There is no terminology like Indian ADR. Indian ADR is just the reactions that is occurring in India. उसको हम लोग इंडियन एडीआर बोलते हैं। तो वो जो रिएक्शंस हुआ, जो डेटा कलेक्ट हुआ, वो डेटा जो है वो आईपीसी के पास उसके डेटाबेस में रहता है, और साथ साथ इंटरनेशनली WHO इज द इंटरनेशनल बॉडी, तो WHO के पास भी वो डेटा रहता है। तो ये डेटा के फॉर्म में स्टॉक किया जाता है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। अब मान लीजिए कि हम लोगों के कंट्री में किसी दवाई से रिएक्शन हुआ, अगर हम लोगों के डेटाबेस में उस दवाई से रिएक्शन नहीं हुआ है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल रेफर टू दी अदर कंट्रीज। जैसे सबसे कॉमनली हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स को रेफर करते हैं, यूएस एफडीए को, कि यूएस एफडीए का उस ड्रग पे क्या स्टैंड था, तो उसने होल्ड किया, उसने उस ड्रग को टर्मिनेट किया, तो हम लोग उसके डेटाबेस को देखते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस का इंपॉर्टेंस है। अगर हो सकता है कोई ऐसा ड्रग हो जो यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं चलता हो, यहाँ चलता हो, उसका डेटा हमारे डेटाबेस में है, तो यूनाइटेड स्टेट्स हमारे डेटाबेस को रेफर करेगा वहां डिसीजन लेने के लिए। तो इसको बोलते हैं इंडियन एडीआर, मतलब हमारे कंट्री में जो एडीआर हुआ उसको हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। Sir, what is Vigibase? विजीबेस इज अगेन ए वेब पोर्टल। मतलब हम लोग जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट हम लोगों के पास आया, अब इसको हम लोग गाजियाबाद कैसे भेजेंगे, तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको विजी फ्लो बोलते हैं। विजी फ्लो में उस डेटा को हम लोग एंटर करते हैं, सेंड करते हैं। तो जो डेटा हम लोग सेंड किए, आईपीसी के पास जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है विजी बेस। तो ऑल ओवर इंडिया से जो डेटा जा रहा है वो विजी फ्लो से होते हुए विजी बेस में जा रहा है, जो विजी बेस आईपीसी गाजियाबाद में, जहां पे पूरे कंट्री का डेटा स्टोर है। सो दैट इज द यूज ऑफ विजी बेस। Okay, sir. सर जितने भी केसेस आपके पास रिपोर्ट होते हैं, तो सर आप सारे को सिग्नल के रूप में देखते हैं, वो सारे सिग्नल्स रहते हैं? सिग्नल जनरेशन का काम जो है वो आईपीसी करती है। हमारा काम है रिपोर्ट को एसेस करना, सीवियरिटी के बेसिस पे, कॉजालिटी के बेसिस पे, उसको ऑथेंटिकेट करना और उसको गाजियाबाद दिल्ली भेजना। अब गाजियाबाद में जो कमिटी है, सिग्नल रिव्यू पैनल, एक एक्सक्लूसिव कमिटी है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। तो उस कमिटी के लोग ऑल ओवर नेशन से जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसको फिर एसेस करते हैं और देखते हैं कि इसमें से सिग्नल जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आईपीसी में होता है। थैंक यू सर। Sir, what is active pharmacovigilance and passive pharmacovigilance, sir? Pardon?
So बहुत सारे हमारे यहाँ पे डिप्लोमा अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो they will be having these courses in the second year curriculum. Okay. So their queries are related to this one. So the question from the student was, what is the difference between active and passive pharmacovigilance? Active pharmacovigilance and passive pharmacovigilance, as the name suggests, active and passive. Active pharmacovigilance अगर किसी organization में institute में अगर AMC है, then that is actively working for the pharmacovigilance program of India. Passive pharmacovigilance अगर हम लोग indirect route से जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, कोई लोकल ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो अगर रिपोर्ट कर रहे हैं किसी एएमसी में आकर के या एनसीसी आईपीसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, देन या कंज्यूमर डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, देन दैट बिकम्स पैसिव फार्माकोविजिलेंस. इसमें जो मेन डिफरेंशिएटिंग होता है दैट इज एक्टिव रिपोर्टिंग एंड स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग. स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग हुआ कि अगर रिएक्शन हुआ और हमने रिपोर्ट किया, स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट. So this is the more important differentiating terminology. Okay, sir. Any further questions? Excuse me, sir. What is the difference between pharmacovigilance and drug safety? Difference between Pharmacovigilance and drug safety. Pharmacovigilance and drug safety. Pharmacovigilance and drug safety. Yeah. It is interconnected actually. Pharmacovigilance is a patient safety and drug safety. Pharmacovigilance is the pharma plus vigilance. That means the vigilance of drugs and vigilance of drugs in the manner of safety. So you can call the pharmacovigilance for the drug safety process. मतलब आप फार्माकोविजिलेंस प्रोसेस को अप्लाई करके ही ड्रग सेफ्टी को श्योर कर सकते. Thank you, sir. Any more questions? Sir, what is E2A, E2B, and E2C guidelines, sir? These are the guidelines these are the ICH guidelines actually, and you can open ICH guidelines for the good pharmacovigilance practices. They mandate the each and every definitions for the good pharmacovigilance practices. E2A, E2B, E2C, these are the guidelines for the different reporting systems, like E2A for the individual case safety reports, E2B for the DSURs for development safety update reports, E2D for the planning of pharmacovigilance. So these are the different modules and guidelines for the different types of process. मतलब कि अगर आपको ICSR देना है तो आपको किस फॉर्म में देना है. ICSR is the individual case safety reports, मतलब एक पेशेंट की, and PSER for the periodic safety update reports, मतलब जो कंपनीज है जिनकी ड्रग मार्केट में चल रही है तो उनको पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स देनी होती है रेगुलेटरी एजेंसीज को. तो कंपनी को कैसे देना है वो उसकी पूरी गाइडलाइंस उसमें होती है. दिस आर द लाइक दिस इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. Got it? Yes, thank you, sir. Okay, that's all for today. Thank you so much, sir. Before we end our session today, I would request Mr. Santosh Kumar Jha, Sir, Vice Principal, Om Sadashiva College of Pharmacy, to present the vote of thanks to our guest speakers for the day. Thank you, Snigdha madam. So good afternoon, everyone. On behalf of Om Sadashiva College of Pharmacy, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this conference, Pharmacovigilance, a step toward patient safety, organized by our institute. I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of the conference for their presence and contribution to make this a great success. I am thankful to our guest speaker, Dr. Adil Alil Sakur, MD Pharmacology, Assistant Professor, IGIMS, Patna, and Dr. Monesh Kumar Likhitkar, Ex-Patient Safety Pharmacovigilance Associate, IPC, IGIMS, Patna,
for delivering their very informative sessions on pharmacovigilance and addressing the queries of our students. We are really very much enlightened with your knowledge, sir, and looking forward for such cooperation in future also, sir. We're very thankful to you. A very thank you to you, sir. We are thankful to our honorable chairman, come Dean Dr. B.L. Das, sir, Secretary Sri Udit Kumar Dev, sir, for motivating and supporting us to organize such conferences. I would like to thank our principal, Dr. Neil Ratan Barnwal, sir, for his enthusiastic support. A special thanks to our organizing committee, teaching, non-teaching staff for their untiring support and coordinations. Our heartfelt thanks to our students for active participations during this Pharmacovigilance Week, 17 to 23rd September 2021. And I'm very much thankful to all the participants who have actively participated in various activities which were conducted during these weeks. I am very much thankful to entire participants of the meeting. I am sure that our college will continue to get such conferences in future also. Thank you very much. Thank you so much, sir. With this, we conclude our session today. Thank you all for being a part of today's session, expecting that all of you have been benefited by today's session. Stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir.